So yeah, when they come into play tomorrow, things are definitely going to be more chaotic than it is going to be today. Oh man, absolutely. I mean, we did name this group, not Group Red actually, or Group Red. It's actually Group being so chaotic. It's just a chaos all over there. Ultra Ego, The Saviors, HORAA Esports, Team Blue, Team E Arena, Alpha Gaming, as we were talking about. Especially, I just want to take a name. It's going to be Team E Arena Edge, because E Arena, we all they also have an amazing caliber, but into the previous one they weren't able to be in the top 18, not and they weren't able to qualify. I mean, there were some things went wrong. We'll be having an analysis, and we'll be having a short recap from phase qualifiers, I mean phase 1 qualifiers. But E Arena, I want them, I super duper want them into the grand finals top 18. So reminding to the audience out there watching, it's not grand finals. Yesterday we have seen phase 1 grand finals, and we did crown our winners, which were Flash, right? It's going to be phase 2nd, and it is going to be group matches. It's a round robin format. So all these teams, they have to come up in the fight and be the top 18 amongst these 28 teams. Let's see what is going to be the scenario. But this is Group Red, and this is the last group if I'm not wrong. We did saw all our 3 groups, and man oh man, we are starting off this venture again. It is going to be exciting for sure. 3 groups coming in once again, up to 27 teams, and only 18 of them will be moving forward. So once again, the teams that are in the top 16 plus 2 fan favorite teams, as we've talked about it. Once again, guys, I know you guys love this. We know you guys love this. I mean, there you go, already updated. And looks like this time ASI and 4Tribes, their fans are going strong immediately. I mean, WARGAYE also. I mean, there you go, 4Tribes once again coming on top. Anyway, let me remind you, ladies and gentlemen, I'm pretty sure if anyone joining us here from phase 1, they probably know what this is and they're familiar with this. But for anyone joining us right now for phase number 2, this is PUBG Mobile Asia Battle Wars Chapter 3, and this on your screen are the words that you guys are pulling in through. Well, anyway, these are the votings, and all you need to do to vote for your favorite team is type in hashtag your favorite team's tag in the chat for them to make it to the grand finals as fan favorite teams. We have 2 slots. Last time it was 4Tribes and DRS making to the grand finals as fan favorites. Well, this time let's see who it is going to be. 2 teams will be going up through to the grand finals as fan favorite, and apart from that, top 16 will be qualifying to the grand finals based on the point system. Yeah, and जो भी जनता हम लोग को अभी देख रही है, if you guys are wondering आप लोग अपनी टीम को कैसे सपोर्ट कर सकते हो और कैसे वोट कर सकते हो, so it's a really simple process. All you have to do is type a hashtag, और जिस भी टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उनका आप लोग एक बारी टीम टैग लिखना. That is it. एंड आप लोगों के एक बारी जरूर सेंड करना चैट सेक्शन में उस मैसेज को, एंड जो आप लोग का वोट है वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा, एंड योर वोट्स विल बी हियर एज वेल. एंड लुक एट दैट, आई मीन 4Tribes के फैंस स्पेशली, दे ऑलवेज सपोर्ट द टीम ASI esports WARGAYE. सो शुरुआत में हम लोग को एक्चुअली अमेजिंग, देयर आर एक्चुअली 4 पाकिस्तानी टीम्स जो टॉप कर रही है शुरुआत में ही फैन फेवरेट के पायदान पे. देखते हैं कौन सी हम लोगों को टीम देखने को मिलेगी. देखो, हम लोग को पहले से ही पता है दैट 4Tribes के फैंस अपनी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली DRS के फैंस भी. बट देखते हैं इस बारी पाकिस्तानी फैंस ASI esports को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या 4Tribes को, बिकॉज आई गेस ASI esports या WARGAYE, they need that support of yours in this phase 2. They need that plan B. But let's just have a look on the special gift we were talking about. And this is going to be the giveaway. देखिए, giveaway में participate करने के लिए बहुत ज़्यादा simple step है. All you have to do is type exclamation giveaway in the chat section, and आप लोगों को एक link मिलेगा chat के अंदर. All you have to do is just tap on the link, and आप लोग एक redirect हो जाओगे website के ऊपर. Scroll down, and आप लोगों को वहाँ पर एक image मिलेगा या फिर एक पोस्ट देखने को मिलेगा. जस्ट टैप ऑन इट एंड आंसर करना उन सभी क्वेश्चंस के करेक्टली, और उसके बाद में जो आपकी PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से प्लीज़ नोटेड
एक भी डिजिट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल सही तरीके से आप लोग लिखना वहाँ पे एंड एंटर योर रियल नेम, नॉट इन गेम नेम बट एंटर योर रियल गेम एंड दैट्स इट। आप लोग गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लोगे एंड 5 विजेता वो ऐसे होंगे जिनको मिलेगा ये रॉयल पास। That is true. So make sure everyone, just type in exclamation giveaway in the chat so you can enter the giveaway. And yeah, well, all the best, I guess. Wait, it's that easy. Edge. It's actually not 5 giveaways. It's one actually, winner per. Yeah, it's one winner per match. So it's That's 6 every day. Royal pass. Yep. No, that is insane. Yeah, it's a massive opportunity for the viewers and audience watching out there to win Royal Pass for yourself. Yeah, and please make sure to tell. Make sure to type exclamation mark and giveaway. Then only you'll get the link, right? So ये सभी steps को आप बिल्कुल सही तरीके से एक बारी follow करना, and you'll be in, and you'll be there into the giveaways. Let's see हमारे पास कौन सा एक ऐसा विनर रहेगा जो हम लोग को मिलेगा पहले मैच के अंदर। Bridge, let's just talk about the games as well, right? Because we are having 6 matches today as well, and it is going to be Rondo, Erangel, and Miramar, and the cycle repeats itself. What are your expectations coming in from the map of Rondo? Once again, with Group Blue and Green coming in, we can once again see 4 tribes coming into the map of Rondo, and we all know that they are the one squad that is absolutely dominant on this. But give me 1 second. Wait, I'm kind of confused. Did we see Team Secret? What group is it? Group is Team Secret in? I don't recall. Okay, they are in Group Green. Never mind, they are in Group Green. Yeah. So it is going to be interesting. For a second, I was confused there. I was like, wait, did I not see Team Secret? Because once again, the 2 teams that come to my mind as soon as I hear the name Rondo are 4 Tribes and Team Secret. Both of these teams are really good in terms of elimination points on that one, and we've already seen Alter Ego how good they were, but we will not be witnessing them today as they are in Group Red. So we'll see them tomorrow, but for now, I'm expecting PTR to step up as well. There's Flash, the reigning winners, the champions, and a lot of these players are going to be looking out to take them down pretty early into the game as well. HKG, I kind of want to see how they turn up, how they start off the day here in the playoffs. Last time, phase 1, not so great, but they did have their ups and downs. 4 tribes, of course, they're going to be the ones everyone's keeping an eye out, and Team Secret, both them being in the Group Green. This group is looking scary, especially on the map of Rondo. And absolutely, that is the case, and we will be starting off really strong on the map of Rondo, as you did tell that Team Secrets, they are looking so much insane on the map of Rondo. Let's see क्या वो लोग राउंड के मुकाबले के ऊपर कुछ और भी ज़्यादा अच्छी एलिमिनेशन लेने के बाद में शिकंडे निकाल पाते हैं या फिर नहीं. Because Edge, it's all about the first initial matches. It's all about that first impression you're giving up. So Edge, I mean, it's going to be really important for the team. अभी ज्वाइन करें और अपना वेलकम बोनस क्लेम करें. अपना अकाउंट टॉप अप करें और 100% तक का बोनस हासिल करें. ओलिम ट्रेड, अपने पोटेंशियल को बूस्ट करें स्टार्ट से ही. And then 2 fan favorite teams, but man, oh man, Team Flash, I just gotta say it, man. They just totally dominated everything in phase 1. There was no competition. There were Team Flash and their players everywhere, and especially tops and bows. Man, what an immense level of performance they have shown from the phases till the grand finals. Let's see, Edge, can they actually make the same thing, and can they actually perform and dominate the lobby the same way into the phase 2? What do you think? I mean, as I've already talked about it, Team Flash, they were unstoppable here coming in from in phase 1. Vika, Tops, Bows, Zeus. I mean, all of these players were absolutely insane. Zeus, I mean, ever since playoffs, he was the MVP as well overall. Coming in very strong, and then as we moved on, Vika started off the grand finals on a really good note. Tops with a 1v4, 1v5, 1v6 almost. We've seen Bows in a situation against the RIQ and 52 Esports. They're pulling up chicken dinner as well. And once again,
Zeus, he was always there to support the team. He was always there to with the firepower that he has. And the one good thing about Team Flash is the fact that all four individuals, their individual is killed, and the synergy between them is just insane. The one team that is consistently blowing my mind has to be Team Flash, and I am Yeah. not expecting anything less from them here in in playoffs of phase 2 and phase 3 as well. As a matter of fact, I think they will still keep delivering their best regardless of what the day is or who they're playing against. I mean, absolutely. Even if there is a single player of Team Flash remaining in the match, there's a possibility, there's a chance that Team Flash will be taking that winner chicken dinner. So this is it. I mean, Team Flash, kudos to you all. Huge congratulations on winning that one, and huge congratulations on taking the phase 1. But let's see what you all got in the upcoming phases. And I think the players, they're all warmed up, man. Team Flash, it was just a trailer. The movie is remaining, I true. guess. It definitely does feel like it. It was just the beginning of the reign that they are probably gonna be holding over us for a while. But I mean, once again, we have seen some really good performances coming in from VOIN, Yeah. from Fortress as well. I mean, Fortress, they were performing great ever since playoffs, but VOIN in playoffs they didn't really do that much. Coming into the grand finals, they started off strong and they never let go. The other team that was doing really well in the grand finals was Alter Ego Eras, but they kind of did fall off to, I believe, 7, 8, 9 position, towards the 6th position, I believe. Anyway, towards the bottom of the first page there. So yeah, Alter Ego Eras is going to be another team. Unfortunately, did not get any chicken dinners in the grand finals in phases. They did get a couple here and there every day. They're getting one, so I believe they got 3 to 4. Towards the end of the playoffs there. RQRU, another team that I'm looking forward to because their positioning was also decent. Boom, ended well, with the momentum in their favor towards the end. But another team that absolutely, went insane with the chicken dinners has to be 52 Esports. The only team with 3 chicken Yeah, dinners man. in the grand finals on the same day, by the way. So that Yeah. was absolutely ridiculous. So 52 Esports, I think, this Malaysian team is probably a pain for some of these teams. Yeah, I mean, that's the case. And let's just talk about the Pakistani teams as well in the grand finals of phase 1. Yesterday, we are just talking about, and previous 4 days of those clashes coming in, we had only 2 teams, which were SIT Esports and Team 4 Tribes. Especially 4 Tribes, they did try their level base to gather some chicken dinners. They were able to capitalize only one single chicken dinner. But the level of consistency 4 Tribes had till the end, which is why they were at the top second, right? They were on the second spot of the overall standing. So imagine it, even a one single chicken dinner, or even they had 2 or 3 chicken dinners, 4 Tribes could actually dominate Team Flash. But Team Flash being the best right now, I'm looking forward to the Pakistani region as well because the teams are looking really strong, especially Team WARGAYE. I mean, there were a lot of blunders Team WARGAYE did in the previous playoffs and phases. I mean, those 1v4s and Agent 47 going ham in the squad house. We do remember that in the 9th stage, and WARGAYE, there was a possibility, right, taking that winner chicken. And let's see कि आगे वाले समय के अंदर कैसे ये सारी पाकिस्तानी टीम्स कैसे खेलती हैं, एंड होपफुली हम लोग को और भी ज़्यादा पाकिस्तानी टीम्स देखने को मिले हमारे अपकमिंग ग्रैंड फाइनल्स के अंदर. बट मैं कुछ टीम्स तो आई मीन स्पेशली मैं एक टीम को ज़रूर देखना चाहूँगा, वो रहेगी हमारी टीम ई अरीना ई स्पोर्ट्स. मैन, उन लोगों की परफॉर्मेंस पिछले बैटल वर्स चैप्टर 2 के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट अभी के लिए ई अरीना उन लोगों के पास एक बहुत ज़्यादा फ्रेश स्टार्ट रहेगा. और हम लोग को पता है, हम लोगों ने देखे थे NC2 फ्रॉम ई अरीना राइट इन प्रीवियस मैन, क्या ही भयंकर प्लेयर हैं, और जिस तरीके से वो लोग अपनी M416 या फिर UMP को यूज़ करते हैं क्लोज रेंज के अंदर जाके, एंड कोऑर्डिनेशन जो सिनर्जी के बारे में बात करते हैं. सो मुझे ई अरीना का नाम हमेशा से याद रहेगा, एंड आई गेस टॉप 18 के अंदर या फिर वो लोग आ जाए या फिर ग्रैंड फाइनल्स में हम लोग को देखने मिल जाए तो शायद से 4 चांद लग सकते हैं इस वाले फेज के अंदर. बट एक बार हम लोग जरूर नजर डालेंगे मैप रोटेशन के ऊपर. हालांकि मुझे पता है कि हमारे ऑडियंस को कि मैप रोटेशन क्या रहेगा. हम लोग को 6 मैचेस देखने को मिलेंगे. पहला मैच रहेगा राउंडो का मुकाबला, फिर रहेगा इरांगल और मिरामार, और दोबारा से ये जो 3 मैप है देखने को मिलेंगे. That is going to be the cycle of map rotation there. Rondo, Erangel, Miramar coming in, and then again Rondo, Erangel, and Miramar. We will be witnessing 2 Rondos, and I believe the first one's gonna be blue and green.
first day, that is, of course. So tomorrow, make sure to come back up. It's going to be blue and red. So this time we don't have to wait 3 days for the side of Group Red to come into play. We'll be witnessing them tomorrow itself. So Group Blue and Group Red, sorry, Group Green. I'm sorry. These two groups are going to be facing off against each other in the next 6 maps. So maybe the first 2 maps we will see a little bit of a different gameplay coming in. Maybe any changes in strategies we'll get to witness. We'll probably know. But from Miramar, all of these teams will be adapting to each other, and they probably will be feeling a little more familiar with each other, and that is when you will see the pace change. So I think this round is going to be very, very important to catch someone off guard, to be unique, to be different to other teams, and from your previous plays as well, because now everyone's expecting you to do the same thing. But if you do something different, then you might just be the ones coming on top, especially at the start of the day. Oh, and absolutely, that's the case. And this is the map rotation. And looking forward for the teams. And as we were talking about, like, we'll be witnessing 2 of the groups fighting all together and going all out. Let's see which team and from which group there will be a team coming up top and taking that first winner chicken dinner, because it's all about that initial battle. It's all about that initial match, which is going to be the nave and structure into the upcoming matches. But let's see, Edge. We are starting off with the first match, which is going to be Rondo. Without any further ado, ladies and gentlemen, let's just start phase 2nd, and this is going to be the first match. There you go. We just ended with phase 1. We had our champions, and now heading down to phase 2. First match here in playoffs. Let's see if any of the teams at the top that were at the top in phase number 1, can they perform the same, or do we have other teams stepping up? And will we see a difference in equation as we head down to Rondo, Joutin, towards Tin Long Garden? We've seen a couple of... Oh, I need to clean this place up. Finally, I can get some rest. come into play, as we don't see a lot of any of these teams, actually, as a matter of fact, going towards that northeastern part of the map. The dry part, it's left empty. It's very, very dry at the moment. New York's Factory, Test Track, all of these are still in the circle. Default circle, not a major change. Not a major change, of course. And ये जो जोन है, हालांकि बहुत सारी टीम्स को एक एडवांटेज जरूर देखा जाएगा, पर एक बार ही हम लोग जरा नजर डाल देते हैं DRS के ऊपर. Killer Whitey Frag and Cyclone, and that smiley face name, I just can't pronounce it, that's the thing I can say him. But देखते हैं इस फाइट के अंदर यहाँ पर क्या हालांकि हम लोग को देखने को मिलेगा. DRS गेमिंग के पास ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है, 2 प्लेयर यहाँ पे जा चुके हैं, मजीद बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे एक साथ आ चुके हैं. जिस तरीके से यहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स बरकत करेंगे इस मैच के अंदर, देखने वाली चीज है 313 esports भी आ चुके हैं. बहुत सारी टीम्स, एक्जैक्टली 4 टीम्स का क्लस्टर जो यहाँ पर बन चुका है. यहाँ पर देखने वाली चीज रहेगी किस प्रकार से 313 esports, 4 थ्राइव्स और DRS गेमिंग बच के जाएंगे. फीनिक्स राइज भी है यहाँ पर. सो 3 पाकिस्तानी टीम्स तो यहीं पर कूद चुकी हैं एज, और ये जो यहाँ पर हश्र होने वाला है इन टीम्स का, देखने वाली चीज रहेगी. कोई भी एलिमिनेशन यहाँ पर नहीं मिला है अभी के लिए. ASI esports K2 यहाँ पर एक प्यारा एलिमिनेशन निकाल के जाएंगे, और इसके साथ में IQQ UMP के साथ स्विच करते हुए नॉक ऑफ नहीं ले पाएंगे. T24 की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्यारा कवर फायर आ सकता था, बट D1 उनके एरियस के सामने नहीं थे, विच इज वाई यहाँ पर IQQ को नहीं बचा पाए. और हम लोग को पता है कि 4 थ्राइव्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इस टीम के लिए. कोई ना कोई एक प्लेयर तो रहेगा जो रिस्पॉन टावर के पास खड़ा रहेगा और IQQ को रिस्पॉन कर लिया जाएगा. सो फिनिक्स राइज डीमन esports इन लोगों का पहले नाम था, नाम अभी के लिए इन लोगों ने चेंज कर लिया है. एंड फिनिक्स राइज इन लोगों की भी गन पावर
बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्लोज रेंज के अंदर, और सभी प्लेयर्स की जो कोऑर्डिनेशन और जो सिनर्जी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी। BTR, they already lost one player. Now they might be in a bit of trouble. Things could turn out to be deadly for them. And as you said, 4 tribes, they already have one player towards the recall tower. They've already gone for that. They have 4 players standing. Look at the damage being dealt onto Hancock. I really like play on the name there for him. Hancock. Really amazing. I'm not really sure if he's an actual chef or what. But really love the name coming in from him. Anyway, Team Secret and Boom are still going towards going with that fight against each other, and looks like they might just get taken down early. And well, guess what? Third party interference coming in from ASI 8 and Boom. Is it Boom or Team Secret? I believe it's Boom that's gone. Yeah. Boom esports. They started losing players from the first phase itself, and बहुत सारे players उनके जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मजीद players यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिंदा, और 313 esports के एक player यहाँ पर गिरते हुए रहमान, कॉस्मिक और माफिया रहेंगे हमारे 3-man standing 313 esports की तरफ से। बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है दूसरे टूर्नामेंट्स के अंदर भी। देखते हैं अभी यहाँ पर 141 esports के एशिया बैटल वर्स के अंदर क्या यहाँ पर ये जो प्लेऑफ्स चल रहे हैं इनके अंदर ये लोग क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं, और इस चिकन डिनर को अपने हिम्मत हाथों में लेके जा पाएंगे या फिर नहीं। बट 4 थ्राइव्स रिकॉल कर दिया गया है उस खिलाड़ी को जो यहाँ पे डाउन हो गए थे। तो 414 esports के पास हालांकि 4 थ्राइव्स esports के पास हालांकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है एज, बट द थिंग इज दैट 4v4 बैटल, राइट? कोई भी टीम यहाँ से उस बैटल को इनिशिएट नहीं करना चाह रही है। सब लोग वेट कर रहे हैं, घात लगा के वेट कर रहे हैं अपनी AKM असॉल्ट राइफल और शॉटगन्स के साथ में कि कौन सा प्लेयर ओपन के अंदर आए और कोई गलती करे और ओपनिंग दे, उसके बाद में शायद से हम लोग फाइट ले सकते हैं। बट इस रीजन में हम लोग देख सकते हैं कितनी सारी पाकिस्तानी टीम है। एक्चुअली मतलब 3 पाकिस्तानी टीम्स तो यहीं पर है, 4 Rise, 313 esports और Phoenix Rise। What do you think? Which Pakistani team is going to survive this hell fight? I don't really want to say any predictions regarding those, because I feel like every time I want to name someone, they probably will get taken down instantly. It just feels like the Caster's Curse is hitting really strong. So I kind of want to refrain from doing that. So I want to stay on the safer side, just be safe, and hopefully get to witness some amazing action from these teams, from a lot of these teams actually, as a matter of fact. Zeus is out in the open. Walker probably will be getting the information onto him. A Molotov in the hands though. Walker going for that reload on the S12K. Does have an M4 as well, so both of these weapons will be coming in. Cooking up a grenade will be heard. Great direction, but just not enough. Zeus cooking up the grenade. Still insane. Oh my lord, that was a brilliant performance. Great play there coming in from Zeus. He played that so patiently and so perfectly. Yeah. And not an elimination coming in terms of team, but at one point will be beneficial later on. देखिए मैं रिमाइंडर देना चाहूंगा ऑडियंस को, अगर आप लोगों को पता नहीं है, फेज 1 के अंदर टीम फ्लैश हमारी विजेता बनी थी कल के दिन के अंदर। इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्यारा खेला था। देखिए हालांकि वो लोग कल के दिन के अंदर विजेता तो थे, बट टीम फ्लैश इट्स येट अनदर मैच फॉर देम, इट्स जस्ट अ डिफरेंट मैच फॉर देम। और वो लोग सेम कंसिस्टेंसी के साथ खेलेंगे और ये लोग चिकन डिनर भी निकाल सकते हैं अगर इस तरीके से खेल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा। बट स्काईफोर्स का यहाँ पर 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनको मिल चुके हैं। राइलो बनेंगे हमारे सोलो मैन स्टैंडिंग। टीम वॉरगाये ओके, रेज सामने से शायद से एक ये स्मोक ग्रेनेड डाला गया है, या दैट्स स्मोक ग्रेनेड उनके ऊपर भी जाएगा राइलो की तरफ से। स्काईफोर्सेस तैनात अपनी S12K के साथ में काफी अच्छे तरीके से डैमेज यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का ट्राई तो कर रहे हैं, बट शायद से स्काईफोर्सेस हो गए। जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर। एंड एज you know what, ये फाइट किस लिए हो रही है यहाँ पे? ये हो रही है उस रिकॉल टावर के लिए। Once again, those recall towers are very important. Yeah, I mean that's the case, and SKYFORCE is on WARGAYE पूरा का पूरा यहाँ पर अपना
दम छोकते हो और देखिए एक स्टन ग्रेनेड या फिर एक स्मोक ग्रेनेड दोबारा से डाला जाएगा और ये जो स्मोक है जल्दी से फेड होगा और स्काई फोर्सेस या वॉरगे दोनों से एक ना एक टीम तो एलिमिनेट हो जाएगी। बट वॉरगे यही है मौका उन लोगों के लिए एक प्यारा चिकन डिनर निकालने के लिए, क्योंकि शुरुआती फेज के अंदर या फिर एक इनिशियल मैच के अंदर एक अच्छा चिकन डिनर राउंडर के मुकाबले से ले लिया तो एक बहुत ज्यादा प्यारा स्टार्ट हम लोग को मिल सकता है। और देखिए रेज कितना प्यारा तरीके से एस्ट्रल के यूज कर रहे हैं, आगे की तरफ यहाँ पे चार्जिंग करेंगे। पता है प्लेयर बहुत ज्यादा लो है, एस्ट्रल के की जो क्लोज रेंज दरकार है कौन सी टीम जीतेगी और मुझे लग रहा है रेज बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से अंदर घुसेंगे जिनको यहाँ पे स्विच किया जाएगा यूजी से एस्ट्रल के will be reigning supreme edge, and there we have it, WARGAYE. कोई भी AI नहीं बोलेगा because WARGAYE they're performing amazing. Or 3-on-3 though, on the other hand. 4 eliminations, a really good start for them, to be really honest. And at the moment, Phoenix Rise might be, causing some issues for them, and there you go. This is what I was talking about. You immediately cast Curse. As soon as I took the name of 313, immediately 2 players get taken down there. That is so unfortunate. I mean, yes, I know it is coincidental, but at this point, it just freaks me out as well, I mean, caster's curse could be a thing, but it's all in the head, I guess, because it's all about the performance and the domination coming out from these teams. Let's see क्या होगा, but ग्रैंड फाइनल्स के अंदर भी। बट अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। बट टीम फ्लैश यहाँ से होती हुई एक्चुअली एलिमिनेट वाज इट टीम फ्लैश, वाज इट 313 esports, एक बार हम लोग जरूर देखना पड़ेगा। बट आई गेस इट्स जस्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड लिटिल बिट। बट क्रिप्टो वो जो ग्रेनेड था बहुत ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बट कोई भी नॉकआउट यहाँ पे नहीं आ पाया। आगे की तरफ पड़ेंगे क्रिप्टो, एक प्यारा नॉकआउट और अपनी टीम को अपने कदमों पर संभालते हुए और उनको एक प्यारा सा कमबैक देते हुए इस फाइट के अंदर। एंड शायद से प्रीतम एक और अच्छा नॉकआउट और एसाइट esports प्लेऑफ के फेजेस के अंदर ही इतना ज्यादा प्यारा ये लोग खेल रहे हैं। और देखिए एसाइट esports 7 एलिमिनेशन लेने के बाद में रिवाइव भी कर देंगे और चारों प्लेयर्स दोबारा से तैनात हो जाएंगे अपनी बंदूकों के साथ में। Iron still surviving as well. He'll probably get revived. There you have it. 8 eliminations. Great start for the side of Team ASI8. But Edge, I mean, there was a team which got eliminated. Was it 313 esports? Alright, I'm just getting confused a little bit. We'll be having a look for sure. But Team 52. What do you think, man? I mean, 6 greater eliminations they are having. And right now, Team 52, we do know कि कल के दिन के अंदर या फिर इन्होंने एक अच्छा मैच लिया था, शायद से वो कल के दिन के अंदर ही था। मैं एक बारी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर माय शॉर्ट मेमोरी लॉस। बट Edge, we have seen Team 52 picking up those chicken dinners, more than 15 points. तो शायद से आज के दिन के अंदर वो चीज़ रेप्लिकेट करने का पूरा ट्राई करेंगे। स्प्रे यहाँ पर आ रहे हैं, वाइन esports जोन के बाहर है, हालांकि तीसरा ही यहाँ पे स्टेज रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोन के अंदर एक अच्छे तरीके से रोटेट करेंगे, आईजीएल से अपना काम बखूबी तरीके से निभाएंगे और अपने प्लेयर्स और टीम्स का साथ देंगे। They definitely try to play as a team and come out on top. We'll see how that turns out for them. At the moment, Vox is barely surviving. He's very low on health points, and he will escape that situation. But no, maybe not. Rage will actually be able to take him down at the last second. Voxy, he will get taken down, and 313 as well are out. That is interesting. In 15th position with 3 eliminations. Decent start, but just could not keep up the momentum in their favor, as we now have 14 teams, 51 players in the server. 4 tries, 677k Fusion, that is. The only one that they lost actually is IQQ, if I'm not wrong. Oh, Team Secrets, they're gone. Team 52,
कितना अच्छे तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल दिया और धीरे धीरे यहाँ पर बरकत कर रहे हैं इस मैच के अंदर। एसआईटी स्पोर्ट्स 8 एलिमिनेशन, हालांकि इन लोगों के पास में आ चुके हैं मजीद बहुत सारे प्लेयर्स लोगों के आसपास में जरूर रहेंगे और टीम 52 को प्लेयर्स को यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा। क्रिप्टो तैनात अपनी M416 और 4X के साथ में, प्यारा सा एक बर्स्ट अगर देखने को मिल जाए और सैटिस्फैक्शन शॉट्स देखने को मिल जाए M416 से, शायद से 4 चांद लग सकते हैं इस गेम के अंदर। एसआईटी स्पोर्ट्स अच्छी परफॉर्मेंस, अब इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखें और कंसिस्टेंसी रखें पूरे प्लेऑफ्स के अंदर एंड क्वालिफायर्स के अंदर, तो शायद से एसआईटी स्पोर्ट्स दोबारा से एक बार टॉप 18 के अंदर आएगी और हम लोगों को देखने को मिलेगी अपकमिंग ग्रैंड फाइनल के अंदर। बट एसआईटी स्पोर्ट्स एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और लंबा स्प्लिट। प्रीतम, K2 एंड क्रिप्टो, आप उनकी पोजीशनिंग देखिए कितना ज्यादा दूर। अगर एक भी प्लेयर यहाँ से नॉकआउट हुआ एज तो रिवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आपके क्या कहने रहेंगे? Yeah, I mean, definitely. I mean, if someone gets knocked out there, it's not going to be as easy as it would have. I mean, as they would have liked it. At the moment, 52 East was also looking really strong with 10 eliminations, 40-minute mark hit, stage 3 circle coming to an end. This is just game 1 of day 1 of phase 2. We still have a lot of matches, and we already see so many of these teams performing brilliantly. Even BTR didn't make to the grand finals in phase 1, but here 8 eliminations already, and they're not done yet. 52 Esports will try to increase that number from 10 to 11 at the moment. Actually will be successful to do so, and Cook will get taken down. 52 Esports now on the verge of eliminating side of BTR, but K2, beautiful play with the AUG, takes down Zeus and Team Flash. Well, they're coming to take down players on the side of ASI8. Looks like the plan is backfiring, and they might just get taken down. Well, I think one player, maybe 1-2 players at most on the side of Flash are still surviving. Yep, that's the elimination. आज देखिए एसआईटी स्पोर्ट्स के प्लेयर, ये जो स्प्रेज हैं आज ये गूंज नहीं रहे, बात कर रहे हैं। प्रीतम भले यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स यहाँ पे एसआईटी स्पोर्ट्स के नॉकआउट हो चुके हैं। रिवाइव करने की जरूर दरकार रहेगी प्रीतम के ऊपर, हालांकि बहुत इजीली तरीके से रिवाइव हो सकता है। स्मोक किए जाएंगे, एक स्मोक की दीवार यहाँ पे बनाई जाएगी और तब तक एक अच्छे तरीके से उनको रिवाइव किया जाएगा। 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स और देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए एसआईटी स्पोर्ट्स, मैं धीरे धीरे तो नहीं बोलूंगा, बहुत तेजी से यहाँ पर एसआईटी स्पोर्ट्स अपने चिकन डिनर की तरफ शायद से बढ़ रही है। बट हम लोग देख सकते हैं एक टीम लोग जो सामने रहेगी और गेट कीपिंग का सिनेरियो एसआईटी स्पोर्ट्स के खिलाफ यहाँ पे बन सकता है। सो बेटर रहेगा जल्दी से रिवाइव करें, जोन से जितना जल्दी हो भाग सके जोन के अंदर, तो बहुत ज्यादा प्यारी स्ट्रैटेजी रहेगी। आईजीएल अपना काम बखूबियत तरीके से निभाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी एसआईटी स्पोर्ट्स के लिए। और हम लोगों ने देखा ये सारी की सारी पाकिस्तानी टीम्स कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं प्लेऑफ्स के अंदर। हालांकि ये तो सिर्फ फेज सेकंड की स्टार्ट ही है, सो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे बन रही है। बट बूम ई स्पोर्ट्स पिछले ग्रैंड फाइनल्स के अंदर और पिछले फेज 1 के अंदर बहुत प्यारी परफॉर्मेंस। बूम ई स्पोर्ट्स जो इनिशियल लेवल होता है, जो इनिशियल स्टार्ट होता है, जो इनिशियल डेज होते हैं, बूम ई स्पोर्ट्स उनको बहुत ज़्यादा हल्के तरीके से लेते हैं और एंड के अंदर आके वो अपना असली नेशनल गेम प्ले दिखाते हैं। सो मैं बूम ई स्पोर्ट्स को तो एक ही सजेशन या फिर फीडबैक दूंगा कि अपना शुरुआत से ही दबदबा बना के रखें इंटरनेशनल लेवल में। That is what they do most of the time, and yeah, well, if they can just keep doing the same, the consistency is probably going to be the one that what matters the most in these situations, especially. I mean, on Rondo, once again, we talked about it. These teams and these players, they try to get the elimination points. They focus on that more than the chicken dinners there. Because when it's raining in, they will push him out, and well, BTR, they will lose a player, knock. And is that the end? I think that's another elimination coming up. So BTR are going to be out of the picture as well. We're down to top 11 teams, 34 players still in the server. As Boom now feeling the heat coming in from SKG. SKG, they've been, in a decent situation in the last playoffs, but the grand finals, they were at the very, very, very bottom, unfortunately. But ASI8 now fighting this. SKG can actually capitalize and maybe get a few more points. They're up to 3 now, but they're not done yet. Yeah. अभी एसआईटी स्पोर्ट्स हालांकि जोन के अंदर तो पहुंच चुकी है। K2 यहाँ पर डाउन होते हुए और क्रिप्टो अपनी फुल एचपी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्रिप्टो एक ग्रेनेड यहाँ पर आ जाए तो अच्छा हो सकता था, बट नहीं, क्रिप्टो शायद से थोड़ा बहुत जल्दबाजी कर गए
और अपने आसपास के सराउंडिंग्स या पीछे के जोन को क्लियर ना करना उनके लिए गलती साबित हुआ और एसाइड ई-स्पोर्ट्स जिंदा रहेगी सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ में। K2 अभी भी जिंदा है, सो उनके पास में एक होप है, एक रेखा है, शायद से हो सकता है इस चिकन डिनर को निकाल के लेके जा पाए। बट DRS गेमिंग नेपाली जाइंट्स हमारी स्क्रीन के ऊपर 4 एलिमिनेशन उन लोग के पास में भी रहेंगे, बट दाद देनी पड़ेगी एसाइड ई-स्पोर्ट्स और टीम 52 13 और 12 एलिमिनेशन। वॉरगे के पास में भी 8 एलिमिनेशन है, तो रुकने का नाम तो शायद से आज पाकिस्तानी टीम्स कहीं पे भी लेंगी नहीं। ग्रेनेड यहाँ पर जाते हुए स्प्रे यहाँ पे लेंगे K2, प्यारा स्प्रे, और AUG से टीम HKG टीम हांगकांग के प्लेयर को यहाँ पे ढेर किया, चारों खाने चित करने की बारी, बट नहीं, एक और प्लेयर ऐसा ई-स्पोर्ट्स का अपने कदमों पर और ग्रेनेड आ रहे सामने से। K2 जिंदा रहने का पूरा सर्वाइव करेंगे, जिंदा रहने का पूरा एक्चुअली ट्राई करेंगे, बट नहीं, दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर एसाइड ई-स्पोर्ट्स। घिर गए थे इतनी सारी टीम। ओलिव ट्रेड पर 280 रुपए सब कुछ बदल सकते हैं। रुकें, सिर्फ 280 रुपए? जी हाँ, आप इस पर ट्रेडिंग अभी शुरू कर सकते। What a start to phase 2. What are these action? What is this action that we're getting to witness? Absolute beautiful performance from a lot of these teams, and we're not done yet. What do you think? Who do you think is going to be the one coming out on top? Prediction time, Inferno, for you, because it feels like your, counter skill is much weaker than mine at the moment. I mean, that could be the case, but I don't know, man. VOIN esports मेरे को जो एक नाम बार बार खटक रहा है, क्योंकि ग्रैंड फाइनल्स के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, प्लेऑफ के फेजेस के अंदर, आई मीन फेज 1 के प्लेऑफ्स के अंदर और क्वालिफायर्स के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। सो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कंसिस्टेंसी। VOIN esports जो इनिशियल बैटल या फिर इनिशियल मैचेस के अंदर चिकन डिनर निकालने का पूरा ट्राई करते हो, वही चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। उनके पास में ज्यादा एलिमिनेशन नहीं है, सिर्फ 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स रोटेशन के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ से वहां से निकालने होंगे। सर्वाइव करने का पूरा ट्राई करेंगे। DRS और RRQ जो मिड रेंज की बैटल है उसके अंदर देखते हैं कौन अपर हैंड लेके जाएगा, और ये जो मिड रेंज की बैटल है क्लोज रेंज के अंदर कन्वर्ट होगी। और ये जो 4v4 की फाइट है, लैपर का जो नॉकआउट आया RRQ के ऊपर, बहुत जल्द रिवाइव हो जाए तो बेटर रहेगा, बट 5 एलिमिनेशन सिर्फ RRQ के पास, और DRS की टीम भी उन लोगों के सामने। साइक्लोन यहाँ पर डाउन हो चुके हैं अभी के लिए। DRS, can they capitalize? They still have 3 players standing on their feet with only 4 eliminations. They gotta be careful not to get eliminated. Cyclone is gonna be out. Huzaifa on the side of Phoenix Rising will drop him. But the manpower that DRS has still is insane. Those 3 players are very crucial. Killer IT, Frag, and the smiley faces Inferno said. They're very, very important, and the grenade will be dealing a bit of damage onto Demon on the side of Phoenix Rising. Phoenix Rise, more like. As that fight will be, on hold at the moment as we divert our attention towards both tribes. They're trying to third party the fight between Boom and HKG, and they've not been able to be successful. Oh. And previously it was not Boom that did get eliminated, but now they will be the ones getting taken down. एग्जैक्टली ग्रेनेड यहाँ पर आता हुआ, जो ग्रेनेड है कनेक्ट कर सकता था, शायद से 1 सेकंड अंडर कुक रहता तो मे वो जो ग्रेनेड का कनेक्शन आ सकता था उस खिलाड़ी के ऊपर। VOIN esports, दिस इज द पिक दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। फाइट लेंगे यहाँ पर टीम वॉरगे के अगेंस्ट, और ये पहली 4v4 फाइट टीम VOIN esports की स्टार्ट हो चुकी है। जो 2 एलिमिनेशन पॉइंट थे क्लोज रेंज के अंदर VOIN esports से निकाले थे ऑडियंस, एक बार आप लोगों को बता दूं, एक रोटेशन क्लैश के अंदर इन लोगों ने निकाले थे, और टीम 52 ये जो हमारी टॉप 2 टीम्स है वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी हैं। 12 और 13 एलिमिनेशन लिए थे इन लोगों ने। कितना प्यारा परफॉर्मेंस है आज के दिन के अंदर, और 4 ट्राइब्स के फ्यूजन यहाँ पर एक अच्छा नॉकआउट निकालेंगे। 2 ही एलिमिनेशन यहाँ पे इन लोगों को मिले हैं। हुज़ैफा डाउन हो जाएंगे, MVP है, ओवरऑल MVP थे हमारे ग्रैंड फाइनल्स के अंदर फेज 1 के अंदर, बट नहीं, फ्यूजन उनके ऊपर भी एक ग्रेनेड आता हुआ, और मे बी 4 ट्राइब्स एक बहुत ज्यादा गंदे सिनेरियो के अंदर अभी के लिए सोलो मैन स्टैंडिंग रहेंगे 4 ट्राइब्स के। क्या यहाँ पर रिवाइव हो पाएगा या फिर नहीं? VOIN esports वॉरगे के प्लेयर को या फिर खिलाड़ी को नॉकआउट करेंगे उस ग्रेनेड से। DRS गेमिंग के प्लेयर्स भी 4 एलिमिनेशन के बाद पीछे से करते हुए कुछ स्प्रेज और थर्ड पार्टी, और यस यहाँ पर हुज़ैफा को डाउन करेंगे एंड फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। सो एज टीम्स आर कमिंग इन दिस फाइट्स
the third party and the proximity is set, ये जो battle ground है बहुत ही जल्द convert हो जाएगा एक slaughterhouse के अंदर. The circle coming to a close as well, right? It's gonna be problematic for a lot of these teams. We're down to 6, by the way. 17 players still in. VOIN are the only ones with 4 players standing. And you can see the one surviving player inside of 4 tries. He's just alive right now. He's just making sure that he gets as many points as possible to start the day off on a good note. This grenade could be scary. Killer YT will be doing no damage onto Demon. And the counter grenade will be dealing 6 damage. Killer YT out in the open, but the next blockade just reigns supreme against the UMP. I believe that he had in the hand. No, Demon. He's gonna get taken down. Ooh. Wait a second. It was not even DRS that got said. It's Shaka from WARGAYE. Long range stole that point. They're gonna be happy with that. Man, oh man, WARGAYE, क्या performance and 4 stripes के T24 OP डाउन होंगे और शायद से 4 ट्राइब्स भी यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है. हम लोग को मिल चुकी है हमारी टॉप 4 टीम्स. राउंडो के मुकाबले के ऊपर 12 टॉप प्लेयर्स भी जिंदा रहेंगे और इस फाइट के अंदर प्रैग्रॉस बहुत अच्छा स्प्रे. 4 एलिमिनेशन यहाँ पर आरआरक्यू के पास. हम लोगों ने हालांकि पिछली बार देखा था, जो हम लोगों ने देखा था एक बार आरआरक्यू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पास में 4 एलिमिनेशन से. तो देखिए कुछ चंद मिनट्स के अंदर और भी ज्यादा एलिमिनेशन लोगों ने लिए. 9 से 8 एलिमिनेशन कुछ 2 से 3 मिनट्स के फासले के अंदर लोगों ने लेनी है और आगे की तरफ बढ़ेंगे. टीम आरआरक्यू डीआरएस के फ्रैग को स्पॉट किया. कितना अच्छा स्प्रे और शायद से आरआरक्यू यहां से फॉल ऑफ करती हुई जेनफोर्स प्रैग्रॉस अपने कदमों पर लैपर फिनिश ऑफ हो जाएंगे. और फ्रैग को पता है यही है मोमेंट. लोहा है गरम और अगर तौला मार दिया तो आरआरक्यू को शायद से एक 1v4 कर सकते हैं. डीआरएस फ्रैग नहीं. He is gone and dusted. Revival को छोड़ा और S12 का कहर बचाया. 3 players now, that's all there are. 3 teams, I'm sorry, with 9 players in the server. RIQ, WARGAYE, VOIN, once again surviving with 4 players till the end. Absolutely beautiful performance coming in from them in terms of survival, but in terms of elimination they don't really have a lot to show, and they're the only one in the circle. So circle prediction rotations are on point. A bit of luck in their favor as well, to be really honest. That airdrop I don't think is going to be looted by anyone right now. It's pretty scary, to be really honest. It's out in the open. WARGAYE with 2, RQ with 3, and VOIN with 4 players standing. Clearly have the advantage, but let's see how these teams are going to be taking the fight. They will first drop 2 players on the side of RIQ, and RIQ not in the heat already. Pragos gets taken down. First, they'll be fired up as well. And now it all comes down to Genpod in a 1v6 situation. I don't think there's a lot that he can do. He may actually be able to take down a couple players on the side of WARGAYE, but that's about it. VOIN right now are going to be the one feeling really, really confident. Absolutely, WARGAYE और RRQ, they are surviving with 2 and 1 player. WARGAYE के रेज को यहाँ पर डाउन किया जाएगा. RRQ का वो आखिरी प्लेयर बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बनता हुआ शायद से ट्रबल देंगे. 1v2 कर दिया गया है. वाइन esports, मेरी बोली शायद से पत्थर की लकीर. मैंने बोला था कि ये शायद से टीम चिकन डिनर लेके जाएगी, and I did predict वाइन esports आखिरी तक 4 प्लेयर्स के साथ में सरवाइव करती हुई और शायद से जेनफोर्स को भी यहाँ पे नॉकआउट करके फिनिश ऑफ कर सकते हैं. आगे की तरफ बढ़ेंगे. S12 के साथ में 4 प्लेयर्स पुश करेंगे एक साथ, तो एक अकेला खिलाड़ी क्या कर पाएगा. मेरी प्रेडिक्शन होती हुई सही और देखिए वाइन esports लेके जाएगी विनर चिकन डिनर. आई हैड अ रियली सिंपल एनालिसिस, क्योंकि पिछले फेजेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वाइन esports इनिशियल गेम के अंदर बहुत ज्यादा स्लो खेलती है, बहुत ज्यादा पैसिव खेलती है, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू कैपिटलाइज दैट चिकन डिनर. एंड वही सेम चीज हम लोग को देखने में मिली. एंड पता नहीं, मेरे को कभी कभार थोड़ी बहुत वाइब आ जाती है कि शायद से ये चिकन डिनर लेके जा सकती है, ये टीम हो सकती है. एंड there we go, वाइन esports taking that winner chicken dinner. I told you. I mean, see, I know you had the right prediction, but I told you. When you say something, it somehow manages to be right. I'm telling you, prediction god, you are, that is, of course, and somehow I'm the one, putting in the caster's curse on them. But yeah, anyway, what a great start for the side of VOIN. I mean, they're picking up the pace from where they left off here in phase 1 grand finals. Unfortunately, they were pushed down to third position by 4 tribes and Flash in 2 and 1 position response.
Booking.com ऐप पर अपने लिए बेहतरीन होटल खोजें। Teams coming up, and VOIN, you can see they're using the same strategy that they did previously, surviving till the end with 4 players. That is one thing that worked out for them, and it still is working out for them, so that's good to see. But also really interesting to see how 313 actually played off here. And I was also really excited to see BTR stepping up. Up until one point they were coming up on top on most of those fights, so it was really amazing to watch them play. Overall, a great start to phase 2. Let's just not forget about ASI esports and especially Crypto and K2, man, that deadly duo. They were able to manage and gather 10 plus elimination points. So edge, I mean, हालांकि उन लोगों ने चिकन डिनर नहीं निकाल पाया. देखते हैं आगे वाले मैच के अंदर वो लोग चिकन डिनर निकाल पाते हैं या नहीं. मजीद बहुत सारे प्लेयर्स के साथ में वो लोग शायद से गेट कीप हो गए थे और बहुत सारे प्लेयर्स उनके आसपास थे, तो शायद से बहुत ज़्यादा दिक्कत रही थी और बरकत नहीं कर पाए थे इस मैच के अंदर. देखते हैं आगे वाले मैच के अंदर किस नज़ाकत से खेलेंगे ऐसा ई स्पोर्ट्स के चारों हमारे शेयर. और बहुत ज़्यादा अच्छा गेम था ये वाला, एंड वी स्टार्टेड ऑफ नॉट वे टू केओटिक बट नॉट वे टू पैसिव एज वेल. बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मैच मेरे को ये लगा, एंड बहुत स्मूथली ये मैच चला गया. मेरे को तो पता भी नहीं लगा, मेरे को लग रहा है अभी जैसे सिर्फ पिछले ही कुछ चंद पहले हम लोगों ने मैच स्टार्ट किया था और ख़त्म भी हो गया. सो अ वेरी स्मूथ मैच इट वाज इंडीड. बट इसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल दैट इज नॉस्टैल्जिक टू सी एवरी टाइम. पता नहीं, आई मीन मिरामार इट्स माय पर्सनल फेवरेट, बट समटाइम्स जो एंगल हम लोग देखते हैं इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक. आई मीन एंगल की हर एक रोड या फिर हर एक रिज से हम लोग वाकिफ, और देखते हैं रैंगल के मैप के ऊपर कौन सी एक ऐसी टीम आएगी जो शाइन करेगी और लेके जाएगी उस चिकन डिनर को. We'll wait and watch the map of Rango. Of course, things will be looking interesting on that, and you said nostalgic effect definitely going to be coming into play. Classic map of PUBG Mobile. So a lot of these teams are familiar already, and we've seen a lot of these teams already face off. Unfortunately, we will not be getting to witness the Team Flash and HORAA here. That is once again, that is one fight that I really am excited. I really was excited to see on the map of Rango in the phase 1 grand finals. I think it was more like 40's dominance on Rondo, Fights and Team Secret on Rondo, Flash and HORAA that we were really excited on Rango. And then when it came to Miramar, again it was Flash and DRS. These were the kind of fights that kept on happening. I mean, consistently. It's a pattern. These were the ones. These were the ones that kind of were inacculate with the maps. That we got to witness. So it was really amazing to see. Let's see phase 2 if something similar is going to happen, or do we have a change in pattern as we will be going forward with the days and the phases as well. Yeah, indeed. And we're done with the first match, and we are starting off strong, man. It's just phase 2, man. Oh man, let's see into the upcoming matches what we will be witnessing, cause Wrangle and then Miramar and the cycle repeats itself. And audience को एक बारी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा chat के अंदर. I mean, let's just have a look on the highlights first, then we'll be having a look and telling you the surprise जो भी audience हम लोग यहाँ पर अभी join कर रही है. But let's just have a look at the highlights, cause 4 tribes versus team Phoenix Rise, and यहाँ पर इस section में तो बहुत सारी पाकिस्तानी teams थी और सब लोग एक cluster और गुच्छे के अंदर आके fight ले रही हैं. देख सकते हैं हम लोग SKYFORCE versus WARGAYE. बहुत ज़्यादा अच्छा एक वहाँ पर S12 का शॉट आया और नॉकआउट लेंगे एसआई स्पोर्ट्स इंग्लिश के ऊपर जो स्पेशली वो स्प्रे था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और दिखाता जताता है इन लोगों का एक्सपीरियंस. एसआई स्पोर्ट्स धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस गैदर कर रही है इंटरनेशनल लॉबी के अंदर. मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए, और हो सकता है इंटरनेशनल लॉबीज़ को ये लोग भी डोमिनेट करना बहुत जल्द स्टार्ट करे. मैं क्या बोल रहा हूँ शायद से गलत सेंटेंस हो सकता है क्योंकि एज they started dominating as well. Yes, esports, the domination is there. Yeah, the domination has been there. They've been going really well, and you can see that was the play coming in from WARGAYE. Brilliant performance coming in overall towards the end from everyone. As a matter of fact, you can see Q there taking on players on the side of DRS. This was a great capitalization coming in from VOIN. Good positioning as well, if you ask me. So a great start overall for the side of VOIN. They will be your winners and chicken dinner getters in map number 1 here in phase 2 playoffs. Day 1, VOIN Zeta with 2 eliminations. We have Gakor with no elimination but 68 damage dealt.
Of course, Pareto 5 Voxy will be coming in with 1 elimination, 2 elimination respectively, and 91 damage, 200 damage. VOIN Esports, great start, but with only 5 eliminations, they will get the chicken dinner though, so that's 15 points, and they will be happy with how things turned out. Exactly, and these are the winning team stats. VOIN Esports, the Indonesian region and the Indo-dominance we always do talk about is reigning supreme. I mean, Indonesian teams and especially Vietnamese teams, and now Pakistani teams as well joining the spot. जैसे जैसे हम लोगों ने SIT Sports का performance देखा, वो बहुत अच्छा है, और मैं तो बोलूँगा इसी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट करते रहे और जो अपना दबदबा है बना के रखे. बट MVP रहेंगे हमारे वारगाए के रेज. 7 एलिमिनेशन, 5 नॉकआउट और 26 मिनट का सर्वाइवल टाइम और 1426 का डैमेज रहेगा इनके पास में. बहुत अच्छा. एक बार हम लोग डैमेज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 27% का यहाँ पर हेडशॉट परसेंटेज था. 45% was the body damage and leg shots coming in. Instead for 27%. So a great dominance, and he deserved it and he owned it. Hashtag Rage OP. Man, oh man, he's the MVP. But Edge, after this, we'll be having a look on the match ranking, क्योंकि पहला ही मैच है, so match ranking ही होंगी हमारी overall standings. As we take a look at the top 4 players, we can see that Rage, was the MVP, of course, and Gen 4's on side of RQ. He's been stepping up consistently. K2 has been the one player on side of ASI. I don't think I've seen anyone else except him, and maybe like once I think we saw Iron coming in from them, but apart from that, no one else. And Boom on the side, we do see Keru coming up with the number 4th position in the top 4. Yep, these are the top 4 players, and Edge, especially K2, man, huge round of applause for that player, and taking 5 elimination as we were talking about. Gen 4's as well taking 6. Boom Esports going to be joining the spot as well. Let's see into the upcoming matches, can we see all these players just reigning supreme. But we'll be having a look on the teams to watch out into the upcoming one, because WARGAYE is the one, Team 52 is the one, ASIT Esports and DRS Gaming are the 4 top teams to watch out into the upcoming match. 12, 13 and 6 eliminations simultaneously. Keep an eye out for them, definitely. I mean, starting off really strong as well, 52 Esports, DRS. The fans are going to be delighted, especially for these two teams. And triple 1 eliminations total. And a double 1 elimination in terms of grenade. 3 airdrops looted. 2 vehicle eliminations, 10,387 healing done. Rika on the side of Flash with the longest elimination. And yeah, it's been a while since we've seen that name in anything, as a matter of fact. On the overall MVP or the MVP, as a matter of fact, top 4 players. Vika has been quiet for a bit, but let's see how things go from here on forward for them, as well as the players as well. Tops, Bows, Vika, Zeus, Team Flash. There's going to be a lot of expectations coming in from them. As we take a look at the match rankings, RQ leads at the moment with 21. Absolutely, man. RRQ. I mean, VOIN Esports, they did take the winner with the chicken dinner, but RRQ 15 elimination and 21 total points, just totally decimating and dominating from the 5th spot to the 11th spot. All these teams, they just got eliminated way too early, and 12th to 18, the same storyline for them as well. 4 Tribes, Team Flash, 313 Esports, SKYFORCE, B2K Esports, Esports, and Team Young on Galacticos. Unfortunate positions coming in once again. AMINZ and Yangon, we would have expected them to perform a little better, as when compared to their positions yesterday in phase 1. That is. The vote this time around. So once again, guys, if you want to vote for your favorite team, all you need to do is get into the chat, type in hashtag your favorite team's tag. And I'm kind of surprised to see that the only team with no votes are BTR. This is kind of surprising to me. I mean, they're the defending champions, right? So they will try to defend their title here. But let's just have a look on the giveaway winner, Edge. Yeah, I mean, we're done with one match, and as promised, we will be giving away 1 pass every match
And well, if you take a look at the screen, that is the winner. Okay, we only have the character ID there, so we will just have to wait. And whoever it is, congratulations, a free pass for you. And for you guys, for the rest of you guys that unfortunately did not win, all you need to do is type in exclamation giveaway in the live chat to get the giveaway link. And well, just follow the simple instructions on your screen from there on forward. We will have one winner every match. So that's one winner every sorry, six winners every day. एब्सोल्युटली एंड गिव अवे की जो स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा इजी होने जा रहे हैं. एक्सक्लेमेशन गिव अवे एक बारी चैट के अंदर टाइप करिए एंड शायद से आप लोगों को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग एक बारी पिन कमेंट को एक बारी जाओगे. सो वहाँ पे रॉयल पास गिव अवे का एक जो लिंक है उसके ऊपर टैप करिए. आप लोग एक नए स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट करेंगे एक वेबसाइट के ऊपर. वहाँ पर एक इमेज होगी, उस पर टैप करिए, वहाँ पे अपने आंसर्स डालिए और अपनी PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी बिल्कुल सही तरीके से लिखना है और अपना रियल नेम वहाँ पे लिखना है एंड योर गिव अवे जो है वो आप लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेंगे. सो प्लीज मेक श्योर टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे एंड दिस इज इट एंड वी हैव द फर्स्ट विनर ऑफ आवर गिव अवे. हर एक मैच हम लोग गिव अवे विनर को अनाउंस करेंगे. इसके बाद हमारे पास कोई एक नया विनर हो सकता है. सो प्लीज जाइए जल्दी से जाके अभी पार्टिसिपेट करिए. It's kind of interesting, and yeah, I'm pretty sure everyone's excited to see if they can win a free pass. It gives you a different kind of feel. You know, it gives you a different. I don't want to say motivation, but it just gives you a different kind of happiness when you win something like this based completely on luck. Makes you feel like you're the luckiest person out there. But once again, as we take a look at the fan favorite teams, remember, ladies and gentlemen, the two fan favorite teams, the two teams with the most number of votes, will be qualifying to the grand finals, regardless of what their points are on the overall table. So, if you want your team to be the ones qualifying to the grand finals without any stress, well, all you need to do is get into the chat and type in hashtag, your favorite team's tag. So, let's say Team Secret is your favorite teams, and all you need to do is type in hashtag TS in the chat, and there'll be a vote counted against them. At the moment, they have 6, and 4 tribes leading with 4,209 and counting. So, well, 4,203 votes, and Team Secret might just be, equalizing with 4 tribes. Exactly, that's the case, and these are the fan favorite teams, and मेरे को तो शायद से ऑडियंस को बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि शुरुआत में ही हम लोग देख सकते हैं DRS गेमिंग के फैंस और 4 ट्राइब्स के फैंस डोमिनेट कर रहे हैं और अपनी टीम्स और प्लेयर्स को वोट करते हुए. देखते हैं आगे वाले मैच के अंदर कौन सी एक ऐसी हमारी टीम रहेगी जो सेकंड डिनर लेके जाएगी. लेट्स जस्ट सी व्हाट्स गोना बी हैपनिंग, बट दिस इज इट मैन. आई मीन कोई भी शायद से बताने की ज़रूरत नहीं है स्टेप्स कैसे आप लोग अपनी टीम को वोट कर सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप अ हैशटैग एंड देन टीम टैग. अगर आप लोग DRS को सपोर्ट कर रहे हो सो हैशटैग DRS एंड एक बार चैट के अंदर सेंड कर देना उस मैसेज को एंड जो आप लोगों का वोट है वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा. ब्रिज, let's just talk about the game, man. Next, it's going to be Erangel, and we will be having a look on those hot drop scenarios. I mean, we do not have HORAA esports versus Team Flash coming up here in the region of Yasnaya, but it all depends on the team who will be taking. I mean, which team will be taking that chicken dinner? First team taking the winner with the chicken dinner. It was VOIN esports for sure, but technically, Team RRQ will be taking much more points, right? I mean, they are having 20 plus points. So technically for me, the winner is going to be RRQ. But Edge, what are expectations from the map of Erangel? Erangel feels like, we will technically be looking at a textbook match. Probably just going to be looking at how things are, how things are going to unfold here. And Erangel, I can't really tell because of the addition coming in as with the side of 313 and the way that they're performing right now, right? Things can go out of hand for other teams if they decide to go in really aggressive. But apart from that, I think we've already witnessed how these teams and the groups play off against each other on the map for Erangel without the addition of Group Red. If you remember the first 2 days of the playoffs in Phase 1 as well, when we had Group Blue and Green facing off against each other, we've seen some really slow matches. It was not as chaotic as with the involvement of Group Red. So I'm expecting something similar, but as I said, the only difference this time is 313 esports
So I believe the one team that we're not getting to see this time is Misfit International. So yeah, that kind of is unfortunate. I would have loved to see if they would have performed the same consistency moving on forward. But at the moment, 313 Sports, I really love how they started off things. So yeah, looking forward to see if they're going to be the trump card here on the map of Wrangle. If not, well, then I'm expecting a default textbook play. Absolutely. I mean, the textbook plays and those natural gameplay coming in, that is going to be the case. And we do know that teams will try their level best to pick that winner chicken dinner. And I mean, I just want to see Team E Arena also playing. Super duper excited to see that team. If I'm not wrong, they're in the group Red Edge, so we won't be able to witness their game today. Unfortunate. But Phoenix Rise, DRS Gaming, 313 Esports especially, Team Flash as well, or Trigo. I mean, previously they had a really great run in the previous match, but unfortunate for them, not able to pick any sort of chicken dinner. But let's just have a look on the map rotation, because we do know, and the audience as well, कि क्या हमारे मैप रोटेशन रहेंगे आज के अंदर. राउंडो का मुकाबला हम लोग पहले देखा, फिर उसके बाद में हम लोग रैंगल और मिरामार देखेंगे, और फिर से हम लोग दोबारा से राउंडो, रैंगल और मिरामार का ये जो मुकाबला है देखने को मिलेगा. 6 मैचेस रहेंगे दिन के अंदर, और हर दिन 6 मैचेस हम लोग विटनेस करेंगे, और यही मैप रोटेशन रहेगा हर दिन. सो देखते हैं अगले मैच के अंदर कौन सी ऐसी टीम रहेगी जो शुरुआती फेज के अंदर या फिर पहली स्टेज के अंदर हम लोग को ड्रॉप लोकेशन फाइट्स देखने को मिल सकते हैं, राइट. और इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्लाइट पाथ, राइट एज. Let's see. Wrangle it is. But Edge, what do you think? Which is the team into the upcoming ones? Which team you're looking forward to pick that winner with the chicken dinner? Ooh, coming into an angle, as I said, I'm expecting textbook play. And if everyone plays according to the textbook, then I think RIQ maybe the side of Boom, actually. Might be the ones coming out on top. You never really know. But yeah, I feel like, Boom or RIQ might be the ones coming up. But we also have BTR. So there's a lot of these teams, man. But yeah, all of these teams, once again, are Indonesian along with VOIN. So Indonesian teams, I feel like, are going to be the ones dominating. So that's probably what my best prediction out there. Rather than naming a team, I think it's better I just name a region and hope to God that they don't mess it up, and then then the players maybe will not be as angry with me as they would have been. I mean, yep, absolutely. And let's see. I mean, we gotta be starting up really soon without any further ados and delays. But you did have a really great name, which was RRQ. Absolutely, man. That could be the case, and RRQ might be taking the winner with a chicken dinner. But Frag, into the previous one, he was about to do that 1v4 against Team RRQ. But, ladies and gentlemen, this is going to be Asia Battle Wars Chapter 3rd, Phase 2nd, Playoffs Qualifiers. And this is match number 2nd, starting off strong. Oh, okay, never mind. I mean, was wrong. 70s was right. Shooting range से क्रॉस करते हुए 70 पर हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे. मिलिट्री बेस यहाँ पर खाली रहेगा शायद से, if I'm not wrong, क्योंकि मिलिट्री बेस के ऊपर हम लोगों को टीम्स नहीं जाते हुए देखने को मिलती हैं. बट पुशिंग की जॉर्जपुल सिटी, जॉर्जपुल कंटेनर्स एंड 70 रोजॉक एंड स्कूल ऑफ आर्ट्स इज गोइंग टू बी द हॉट ड्रॉप लोकेशंस हियर. देखते हैं वहाँ पे टीम्स चाहते हैं या फिर नहीं. स्काई फोर्सेस हालांकि यहाँ पर उतरी तो है शुरुआत में, बट स्काई फोर्सेस नोवर रेफनोए के कंटेनर्स पे जाती है, मिलिट्री बेस पे नहीं जाती है. देखते हैं क्या स्काई फोर्सेस आज अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज करेगी या फिर नहीं. बट एज starting off strong, RRQ having 21 points. Team WARGAYE as well, man. I did not expect that WARGAYE will be taking 17 points into the previous match. So congratulations all the Pakistani teams. I mean, they're performing great today. But RRQ in the Indonesian region, they always reign supreme. Yeah, I mean, when it comes to just plays in terms of default, in terms of textbook plays, as I said, RRQ usually are the ones coming out on top every single time. And they're the ones leading the charts right now. Once again, with 21 points. We will be waiting to take a look at the circle. And pretty beautiful, actually, to be really honest. Decent. I love that. I love that. What, 40% water? Maybe even more, actually. But just enough to keep it exciting for everyone. DRS jumping towards Primorsk, 40 once again towards Ferry Pier. Military base
under the control of SKYFORCE, but how will they make their way back in? They will have to go towards Milta and then use those roads towards shelter, maybe come back in towards farm. So that is not going to be an easy way back in, but we already have HKG losing players. This is so unfortunate for them. VOIN, coming fresh off of a chicken dinner, on the verge of eliminating HKG in position number 18. Ooh, HKG, Shaojin, सोलवन स्टैंडिंग थे और इनको शायद से यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा, फिनिश ऑफ किया जाएगा. पहली टीम यहाँ से अलविदा लेती हुई हमारे रैंगल के मैच पे से, और 17 टीम्स यहाँ पर जिंदा रहेंगी. टीम फ्लैश देखने को मिल जाएगी. और मुझे पता है एच एंड ऑडियंस वाचिंग आउट देयर, आप लोग होरा ई स्पोर्ट्स का इंतजार कर रहे थे, बट हम लोग यहाँ पे होरा ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम फ्लैश यहाँ पे नहीं विटनेस करेंगे. लेट्स सी वो जो टकराव होरा ई स्पोर्ट्स और टीम फ्लैश की है, हम लोगों को ग्रैंड फाइनल्स में देखने को मिल पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि होरा ई स्पोर्ट्स और टीम फ्लैश अभी के लिए तो दोनों अलग अलग ग्रुप के अंदर है. बट आई विश कि सेम ग्रुप के अंदर होते तो हम लोग को फाइट देखने को हमेशा मिलती. बट ये साइड ई स्पोर्ट्स T2K ई स्पोर्ट्स की जो प्रेसिडेंस है 70 पे, ये रहेगी नेक्स्ट हो रहा है स्पोर्ट्स वर्सेस टीम फ्लैश. देख सकते हैं अभी हम लोग एसआईटी स्पोर्ट्स का एक प्लेयर डाउन हो चुका, 3 मैन स्टैंडिंग रहेंगे. बहुत ही ज्यादा प्यारा स्प्रे क्रिप्टो की तरफ से, 2 प्लेयर्स को यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा. क्रिप्टो को यहाँ पर रिटेलिएशन आता हुआ 2 मैन स्टैंडिंग. टीम एसआईटी स्पोर्ट्स T2 का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी बचेगा और जो रहेंगे वेनम और आई गेस एच. Team ASIT Sports, they are really close to do that 1v2 and they will be defending their spot for sure. Definitely, Venom's the only one standing right now. T2KSaraiki on the verge of getting another beautiful team wipe. Will be able to do so, but that grenade is so good. Will be dealing a lot of damage, and Venom now has a really good chance to maybe close things off here. Will he go for the revival is a question. I think it is going to be possible, but I don't think he wants to take the chance at the moment. He will rush in, try to take one more down, and there's only one more player on the side of ASI8 standing right now, and all of a sudden, T2K Venom with the upper hand, AKM in the hand. Will he be able to get the confirmation? T2K Venom so well, barely on any points of health. There's nothing left, no ammunition as well. He will have to go for the reload. Preetham now on the verge of eliminating the squad. He will have a chance to go for that play, and he will take a bit of damage, but 1 HP, bro. 1 point is all you need. 1 bullet is all you need to land Venom. No! Oh my god. Oh my god. He not just pulled off an amazing clutch, he will also go for the revival on both of the players. T2K. They live, but barely by the skin of their teeth. That was an amazing play from Zod. Oh no, Venom, कितना प्यारा performance, और he was barely serving another pixel HP. 1% भी शायद से HP नहीं होगी वहां पर, उनके पास भी 1 point HP भी नहीं होगी. it शायद से हवा भी मार देता तो वहां पर फिनिश ऑफ हो जाते, बट नहीं. ASIT Esports, I titled it already. T2K Esports versus ASIT Esports. It's the next HORAA Esports versus Team Flash in the region of 70 though. But ये जो 4v4 fight है नेपाल वर्सेस पाकिस्तान, नई कहानी बयां करते हुए और नई कहानी जता करते हुए देखते हैं टीम BTR. हम लोग अपना माइंड एक बारी जरूर डाइवर्ट करेंगे, अटेंशन देखेंगे BTR वर्सेस VOIN esports से. तो शायद से ये जो फाइट है 4v4 की बहुत जल्द स्टार्ट हो सकती है, और ये जो रोटेशन क्लैश है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो सकता है. बट वी डिड टॉक अबाउट कि जो जोन है बहुत ज्यादा डिसेंट है, बट इट्स डिसेंट फॉर द टीम्स जो पहले से ही जोन के अंदर है. जो टीम जोन के बाहर है, हम लोग देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द जो टीम्स है वो जोन के बाहर है. सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 टीम्स है जो जोन के अंदर है. सो रोटेशन क्लैश हम लोग को देखने को मिलेंगे. लेट्स सी टीम BTR हमारी स्क्रीन पे. Team BTR looking really confident, especially after their performance coming up. No eliminations as of now, but they can still step up. There is still a lot of time. 50 Esports, another squad that we are looking forward to see if how many elimination points that they can probably get in this one as well, and position placement as well. The consistency is what matters.
once again, all they need to do right now is get into the top 16, top 18. If you're not in the fan favorites, of course. Top 18 is all you need to keep an eye out for. At the moment, top 16 would be a better bet, just in case. But we usually see 4 Tribes and DRS being the fan favorite, and both of these teams are performing really well as well, usually in the playoff situation. So when the grand finals begins, that is when you need to worry about that number 1, number 2 spot. At the moment, everyone can take a chill pill, but BTR looks like they want to face. They will be facing VOIN, and VOIN never takes it easy. Yeah, VOIN 6 elimination from the start. 7 ही मिनट हुए सो हर मिनट एक ना एक एलिमिनेशन यहाँ पे ये लोग ले रहे हैं. 60 प्लेयर्स जिंदा रहेंगे और 16 टीम्स हैं. वॉइन ई स्पोर्ट्स के पास हालांकि एक टीम ज़रूर है, और ये जो रोटेशन क्लैश हम थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकती है. BTR को हालांकि पता होगा, BTR की रोटेशन भी यहाँ पर लोगों ने एनालाइज कर रखी है, बिकॉज द टेक्स्ट बुक प्लेयर्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट, राइट? क्योंकि टीम्स के पास एक पैटर्न होता है, कुछ रोटेशंस होती है हर स्कोर के हिसाब से, सो वो रोटेशन और पैटर्न जरूर फॉलो करेंगे. बट ये जो रोटेशन क्लास स्टार्ट हो चुका टीम 52 है वॉइन ई स्पोर्ट्स का. वॉइन ई स्पोर्ट्स के यहाँ पर 0-5 डाउन होंगे और शायद से फिनिश ऑफ भी हो सकते हैं. वॉइन ई स्पोर्ट्स के वॉक्सी भी डाउन होंगे. वॉइन ई स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा गंदे सिनेरियो के अंदर और इस रोटेशन क्लैश के अंदर टीम 52 के पास एक अपर हैंड. Eliminations, and they want to keep it going. There's SKG, the only ones getting eliminated right now. 52 trying their best to take down the players on the side of VOIN, but it's not going to be that easy. VOIN on the run, and they will be, escaping it at the moment. Team Flash, on the other hand, are feeling the heat, and they might get eliminated. There's only one more player standing on the side of Flash, at Team Secret. Well, another team that we were hoping to see some more action, but there's a third party in the name of Master Smart, and he's gonna get taken down. What was he doing there? Wait, where's the rest of his team? I mean, they're away from the team, and Team Flash, weaker. I mean, they're surviving with single soulman standing it. अभी ज्वाइन करें और अपना वेलकम बोनस क्लेम करें. अपना अकाउंट टॉप अप करें और So there's a hope, there's a light कि टीम फ्लैश चिकन डिनर निकाल के लेके जा सकती है. बट सैंटा यंग ऑन इलेक्ट्रिकॉस के बिल्कुल पास उनके शायद से YG को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इंटेल मिल सकती है. इस रोटेशन के अंदर 313 esports के सामने रहेगी हमारी AMINZ esports. पिछले फेज के अंदर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इन लोगों की, बट टॉप 18 नहीं आ पाए थे. इनकी भी क्लोजिंग की दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी है. बट 0 एलिमिनेशंस यहाँ पर AMINZ esports के पास, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं DRS गेमिंग और बूम esports के बीच में सैंडविच हुए थे. Flash. I mean, the player will be struggling for now, and BTR, on the other hand, will be on the verge of getting eliminated as well. Boom, on the other hand, putting the screws on the side of AMINZ esports. BTR, this player can actually take advantage of this, and we were hoping to see a lot more coming out from BTR, but that's not going to be the case. Now they have to be very, very cautious and play very, very carefully. Because if they get taken down right now, they don't even have a lot of points to work with. 0 and 8 elimination points before this. So, unfortunate positions for them. But things can look better as time progresses if they can just survive and maybe get a kill or 2 later on. 4 Tribes कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट नहीं मिलेगा. टीम SF SKYFORCE AK स्प्रे लेंगे और कुछ कनेक्शन यहाँ पर नहीं बन पाए हैं. बट हुज़ैफा T24 OP फ्यूजन इज ही फलक, शायद से दोबारा से नाम यहाँ पे चेंज किया है फलक ने. हमारा कल के दिन के अंदर शाहीन का नाम लेके आए थे और आज शायद से दोबारा चेंज कर दिया से, तो हम थोड़ा बहुत दोबारा से कंफ्यूज हो रहे हैं. बट शायद से ये फलक होगी. बट देखिए यहाँ पर स्प्रे दोबारा से लिए जाएंगे, बट कनेक्शन नहीं है यहाँ पर व्हाटसोएवर. एजेंट 47 ये खिलाड़ी यहाँ पर डाउन होगा, और आज पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छे तरीके से फाइट्स लेती हुई 4 Tribes की टीम यहाँ से रोटेट करेगी. वेरी फेयर के रीजन में ही है जहाँ पर वो लोग ड्रॉप करते हैं, वहीं पर है, जिसकी वजह से उन लोगों के पास में एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं, क्योंकि रोटेशन करते हैं, कोई और दूसरे रिपोजिशन करके कंपाउंड होल्ड करते हैं, तो कुछ ना कुछ हालांकि टीम से टकराव हो जाती है जहाँ पर आप लोग एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट अगर जोन ही आप लोगों के
ड्रॉप लोकेशन पे आ रहा है तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4-5 देख सकते हैं। हालांकि 700 मीटर जोन से बाहर है, जोन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे स्प्रे लिया गया है फ्यूजन की तरफ से और एक प्यारा नॉकआउट है एंड यंग और गैलेक्टिकोस यहाँ पर डाउन होंगे और एलिमिनेट हो चुके हैं। Gone. Unfortunate position again for them. No eliminations coming into this one, and that's 2 games now where they'll be one of the first ones to get taken down. Quite an unfortunate situation for them, and well, things are going to be looking grim as players will be progressing forward. They will have to get at least few points into the next upcoming games, otherwise things might just get worse for them, as we have DRS and SKYFORCE trying to go for a fight around the bridge here. DRS will go for the retreat, 3 eliminations, and they will try to survive now, try not to take that fight because they understand they don't have a lot of points to work with. Absolutely, DRS Gaming बुलंद सोच के प्लेयर्स हैं एंड हम लोग देख सकते हैं साइक्लोन जा चुके हैं, 2 प्लेयर्स यहाँ पर एक्चुअली डीआरएस गेम के जा चुके हैं। सो शुरुआत में ये बड़ा डिसएडवांटेज डीआरएस गेमिंग को, 13 टीम्स रहेंगी और 36 प्लेयर्स हैं तीसरे जोन के अंदर। एज लेट मी रिमाइंड यू देयर इज ओनली 36 प्लेयर्स स्टिल सर्वाइविंग। सो प्लेयर्स द लूजिंग वी आर लूजिंग प्लेयर्स वेरी रैपिडली, बट टीम्स का एलिमिनेशन नहीं आ रहा है। टीम्स यहाँ पे बहुत सारी सर्वाइव है, बट हम लोग एक बार नजर डालेंगे कि 4 प्लेयर्स के साथ में कितनी टीम्स हैं। 4 थ्राइव्स, टीम फीनिक्स राइज और बूम esports, these are the only 3 teams surviving with 3 of the players, so they're having that man advantage, they're having that upper hand. So chicken dinners and teams के लिए बहुत ज्यादा इनिशियली इजी हो सकता है, बट किसी भी टीम या फिर प्लेयर को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एज let's see what's going to be happening, but AMINZ esports on the screen with 1 elimination point. 3 players standing, and they've been in a tough spot there, right? They were taking down the players on the side of BTR, and that's when another team came in and did manage to deal a bit of damage onto them. BTR at the moment surviving with no elimination points, with 1 player standing. It's looking hard for them, 3-1-3. No eliminations. They also are jumping in. They jumped in with like a disadvantage, 3-man squad. But we'll see if they can capitalize and get more points going into this one. Hoping to see them perform better. With only 3 men standing, it is not going to be as easy, but it all comes down to strategy and team play right now. As we take a look at DRS position, they will be scouting the players on the side of 4 tribes. They will have to be careful because 4 tribes, they do have a full squad, but DRS, only 2 players standing. Exactly. And DRS Gaming, हम लोगों ने एक बारी जरूर उनके ऊपर नजर डाली थी क्योंकि 2 ही प्लेयर्स थे, और दोबारा से एक बारी नजर डालेंगे क्योंकि गेट कीपिंग के जो सिनारियो हैं यहाँ पे दोबारा से बढ़ जाएंगे। और इन लोग जो सामने देख सकते हैं टीम वॉर गए होंगे और सीधा स्लैमिंग कर रहे हैं। क्या देखिए, इतनी सारी टीम्स यहाँ पर डीआरएस गेमिंग के आसपास, कोई भी यहाँ पर स्प्रे नहीं ले रहा है। सो दिस इज लुकिंग इनसेन। देयर आर only having 3 elimination points edge. But the thing is that BTR, the player of the BTR, man, he just spotted DRS. They're just going to be pushing in और S12K का कहर मचाते हुए, और DRS की लवाइटी बहुत बुरा लगा उन लोगों के लिए, and they're just gone and dusted like that. Man, we're down to 11 teams and H. ये जो रैंगल का मुकाबला है बहुत ही एक जल्दी और बहुत ज़्यादा हाई पेस से चलता हुआ, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि रैंगल का मुकाबला इतना जल्दी खत्म हो सकता है। और इतने सारे प्लेयर्स शुरुआत में जा चुके होंगे। Like we lost 50% of the players now. That is true. And the AMINZ get taken down as well. Wait a second. How did that happen? Unfortunate situation for them once again, but they did manage to get 1 point into this one. And let's see if they can capitalize on getting more and more at the moment. Team Secret putting the screws to the players inside of 4 tribes, T24 and Falak are the only ones standing. That grenade could actually be enough to take down BLUG. We'll see as Falak is going to get taken down. It all comes down to T24 now. BLUG on the verge of pulling off a 1v3, and he does. 4 tribes, they get dismantled. Team Secret, 12 eliminations. Absolute brilliant performance coming in from them.
Absolute brilliant performance and individual brilliance. Oh no, Phoenix Rise वो खिलाड़ी क्या कर रहा था, शायद से ऊपर में खड़े हो गए और he wasn't even moving, जिसकी वजह से उनका नॉकआउट आया एंड फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे। डोमिनेशन दिखाते हुए टीम सीक्रेट्स के जू के, हम लोग को पता है टीम सीक्रेट्स स्पेशली फेस के अंदर या फिर प्लेऑफ्स के अंदर कितना अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहता है। फिनिक्स राइज हम लोग जो सामने ऑर्डर को स्पॉट किया गया, वो ग्रेनेड डीमन की तरफ से आएगा और एक अच्छा नॉकआउट लेते हुए Phoenix Rise, they always rise like phoenixes and मौला के ऊपर ये जो ग्रेनेड जाता हो उनको भी डाउन करेंगे। टीम वॉरगे, इनका भी एलिमिनेशन यहाँ पर हो चुका है। We are down to our top 8 teams and 21 players. Let's say कौन सी टॉप टीम रहेगी हमारी जो इस मैच के विजेता बनेंगे। आप लोग जरूर बताना which team will be winning and maybe आप लोग भी अपनी predictions चैट के अंदर। But let's see, SKYFORCE के सॉन्चर यहाँ पर स्प्रेज देते हुए 3 ही एलिमिनेशन यहाँ पर SKYFORCE को मिलेंगे एंड सॉन्चर स्पेशली उनके भी यहाँ पर मिड रेंज क्लोजेस फायर बहुत ज्यादा अच्छी। बूमी एस्पोर्ट्स डायरेक्टली स्लैमिंग करेंगे यहाँ पर एंड Cypher is down and Phoenix Rise they're gone and dusted. 7 elimination यहाँ पर टीम बूम esports को भी मिलेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर ये लोग भी इजाफा करते हुए बरकत करते हुए इस मैच के अंदर। क्या लगता है कि टीम बूम esports तो रहेगी हमारी टीम esports। 3 ही प्लेयर्स 313 के पास रहेंगे और 313 esports के प्लेयर्स कहीं भी अभी तक हम लोग को किल फीड के अंदर नहीं देखने को मिला है। So we understand कि 313 esports के प्लेयर्स क्या एक स्ट्रैटेजी या फिर अपना रहे हैं, क्योंकि ये लोग फाइट नहीं लेना चाहते। ये लोग जा रहे हैं चिकन डिनर की तरफ। लास्ट के अंदर जरूर फाइट लेंगे और लास्ट के अंदर अपनी कयामत बिखेरने का बिल्कुल ट्राई करेंगे इस रैंगल के मुकाबले पर। बट ये जो मैच है बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, टीम्स बहुत जल्दी एलिमिनेट हो रही है और स्पेशली प्लेयर्स, मतलब क्या ही कहने, प्लेयर्स तो आते हैं, ड्रॉप होते हैं, फाइट लेते हैं, एलिमिनेट होते हैं और कुछ यहाँ पर अपने को अपनी चंद टीम्स देखने को मिल जाएगी। 5वां ही जोन है, 18 ही प्लेयर जिंदा है। हम लोगों ने मैचेस देखे जहाँ पे 9वें जोन के अंदर 60 टीम्स और 19 प्लेयर या 18 प्लेयर जिंदा रहते हैं। हम लोगों को टीम फ्लैश के वी का मैन, मुझे दाद देनी पड़ेगी टीम फ्लैश के इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे और दाद देनी पड़ेगी ये जो एक्सपीरियंस होल्ड करके रखते हैं। देखिए गिनी सूट पहना बंदे ने और वी का ही इज जस्ट होल्डिंग देयर, ही इज जस्ट होल्डिंग, ही इज जस्ट ट्राइंग टू कैमोफ्लेज। और वीका मतलब दाद देनी पड़ेगी ये जो बुलंद हौसला लेके हमारी टीम फ्लैश के प्लेयर्स आते हैं। स्पॉट शायद से कर लिया गया या नहीं किया गया है, ओ स्पॉट किया गया और RRQ के लैपर झील की निगाहों से टीम फ्लैश को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे और यहाँ से टीम फ्लैश बाहर होती हुई। चारों खाते चित उन लोगों के बूबी स्पोर्ट्स, उन लोग को स्पॉट किया DRS के जो दोनों प्लेयर्स है ये भी जिंदा। DRS के न्यू प्लेयर के लिए वाइटी बीइंग द ह्यूमन सर्वाइवर। अब देखिए जोन के अंदर ये जो ब्रीथिंग स्पेस और ये जो डिस्टेंस बना हुआ है ना इन टीम्स के लिए बहुत ज्यादा बरकरार। सो ये जो फाइट है ना ये मिड रेंज के अंदर ही सीमित रह जाती है। मिड रेंज के अंदर फाइट होगी और तब जाके शायद से स्लैम इन डाला जा सकता है। बट 313 esports जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे उस टीम के बारे में और क्या स्ट्रैटेजी उन लोगों की है, वो फाइट नहीं ले रहे हैं। तीनों के तीनों प्लेयर्स एक स्प्लिट पे खेल रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, इंटेल गैदर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। बट बूम esports यहाँ पर हालांकि बिल्कुल अपोजिट ही कर रही है। 313 esports का जा रहे हैं, फाइट ले रहे हैं, स्लैम इन डाल रहे हैं और देखिए बूम esports किस प्रकार से यहाँ पर अपनी अपनी टीम के ऊपर फाइट लेंगे और टीम सीक्रेट्स के लॉल वू को भी स्पॉट किया जाएगा। सोलमन स्टैंडिंग नो, ही हैज बीन नॉट स्पॉटेड येट, स्पॉट किया, डाउन किया टीम सीक्रेट, दे आर गॉन। एक और टीम एंड वी आर डाउन टू टॉप 5 टीम्स और 10 एलिमिनेशन दाद देनी पड़ेगी। मैं तो सोच रहा था बूम esports शुरुआती फेजेस के अंदर या इनिशियल डेज के अंदर बहुत ज्यादा पैसिव खेलते हैं, बट वो चीज तो हम लोग को नहीं देखने को मिलेगी। आप लोगों को क्या लगता है ऑडियंस, में आप लोगों से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, आप लोगों को क्या लगता है इन 5 टीम्स में से कौन सी एक ऐसी टीम बनेगी जो चिकन डिनर लेके जाएगी? क्या वो रहेगी बूम esports, क्या वो रहेगी 313 esports या फिर RRQ या फिर SKYFORCE या फिर DRS गेमिंग? सो अपनी प्रेडिक्शन चैट के अंदर जरूर डालिएगा और हम लोग को बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से कौन सी टीम चिकन डिनर लेके जाएगी और अपना एनालिसिस बताइए। बट हम लोग जरा दोबारा से आते हैं इस गेम के ऊपर क्योंकि लैपर RRQ की तरफ से डाउन है और जेनफोर्स और उनका एक और खिलाड़ी जिंदा है। 4 एलिमिनेशन यहाँ पर मिलेंगे। ओ वो जो ग्रेनेड था बहुत ज्यादा अच्छा और एकदम पास में ग्रेनेड उन लोगों के गिरा था। आगे तरफ जाएंगे 2 ओके SKYFORCE
और शायद से actually SKYFORCE उन लोगों के just सामने. They got to be really careful. Sancher, he's gone, and SKYFORCE is also gone. That one grenade decided to fade for SKYFORCE, and they are gone and dusted into this match. Survival बहुत ज़्यादा प्यारा है. एंड सर्वाइवल इंस्टेंस जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो सर्वाइवल आईक्यू होता है, जो सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज होती है, जब आपके 2 प्लेयर जिंदा हो, जब आपका या फिर शायद से 1 प्लेयर जिंदा हो, सो उसमें से DRS गेमिंग और टीम फ्लैश 2 ऐसे मेरे नाम रहेंगे जो मैं बोलूँगा सर्वाइवल गेम्स के अंदर बहुत अच्छा गेम प्लेयर्स आपके टीम्स को एक अच्छे पायदान पे लेके जाते हैं और प्लेसमेंट पॉइंट जरूर दिलवाते हैं, ना ही अगर उन लोगों के पास सेलिब्रेशन पॉइंट्स हो तो. स्पोर्ट्स के प्लेयर माफिया, ये फाइट यहाँ पर लोग की पहली फाइट होगी और देखते हैं यहाँ पर शायद से फाइट जीत पाएंगे या फिर नहीं. बट they're losing the spot. बूम स्पोर्ट्स के मॉल 313 स्पोर्ट्स के अगेंस्ट 3 नॉकआउट यहाँ पर बूम स्पोर्ट्स के ऊपर हो तो चुके हैं, बट कॉस्मिक के ग्रेनेड बहुत प्यारा शायद से, लेकिन कोई भी चिप डैमेज नहीं मिला. One player standing now, and more. How long can he survive this fight? What more can he do? Will he be able to take the player down? There's so many questions in the back of my hand. Back of my head. 313. They will be the one coming out on top, barely surviving, but they will be able to eliminate the entirety of the squad of Boom Esports and Cosmos. Well, he will be back on his feet as well. Irfan, there to save the day. Boom, almost actually made it work. They almost got that elimination, but now down to the top 3 teams. And look at this, 313 with just 3 players. They survived till the end here, Inferno. Not just that, they also have 4 eliminations. This was the first fight, but they're going to be happy with it. Yeah, I mean, that's the thing I was talking about. That survival time, that survival instance and survival gameplay. 313 Esports, they are also great with that, and they are surviving till the end. So let's see 313 Esports आगे आने वाले समय के अंदर किस तरीके से बरकत करते हैं इस मैच के अंदर और किस नजाकत से इस चिकन डिनर को अपने नाम या हाथ करते हैं. 4 एलिमिनेशन यहाँ पे रहेंगे. माफिया हालांकि यहाँ पर डाउन हो चुके हैं और इस खेल से बाहर होते हुए, बट अपनी टीम या फिर वो जो 2 खिलाड़ी हैं उनको अपने एक्सपीरियंस से जरूर हेल्प करेंगे. और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं RRQ, इनका भी हालांकि मैच बहुत अच्छा है. बट ये एक रहेगी 2v2v2 की बैटल, 6 प्लेयर्स और 3 टीम्स. आपको क्या लगता है कौन सी एक ऐसी टीम रहेगी जो टॉप पे आएगी और विजेता बनेगी? Oh, once again, as I said, usually in situations where we don't see a really chaotic match, RRQ are usually the ones coming out on top. You can see them again. I please don't lose right now, please. Not instantly. You can go down later. I don't mind. Just not now. But yeah, I mean they take a bit of damage there, but immediately going with a heal. Firen and GenForce, the only ones standing right now. So I think RQ, with the way things are going, they might just be the ones coming out on top. If there's no surprise for any of us. I mean, that's true. RRQ with the textbook plays and the traditional plays on the map of Miramar, it's really crazy. But 313 Esports पास आते हुए विजुअल रेंज के अंदर है 313 Esports के प्लेयर्स, और ये जो जेनफोर्स का ग्रेनेड है शायद से नॉकआउट लेके जा सकते हैं. नॉकआउट तो नहीं, बट बहुत ज्यादा डैमेज लिया और मजीद प्लेयर्स जिंदा रहेंगे उनके आसपास. 313 Esports, a Cosmic, Genforce, he whiffed that spray, and Cosmic found the opportunity and the opening. Last player standing, RRQ. Iron will be able to get one onto Cosmos. 313. They have equalized the fight between them, but DRS, they can capitalize. This third party could be deadly if it comes into play at the moment. Fern will try to actually get the confirmation onto Cosmos, and I think Cosmos will probably be going down, and that grenade will confirm. Nope, actually not, but it doesn't really matter. He will get taken down regardless. So DRS now clearly have the upper hand, and they might be the one coming out on top. And there you have it. DRS Killer YT will isolate Firen and take him down. It's the 1v2, 313 Esports. Can they come out on top? That's the case, and Irfan being the solo win survivor, and the answer is no, because 313 Esports, they're getting eliminated, and DRS, the survival we always talk about, in the survival game we were talking about, DRS Gaming coming with the top-notch performance, and there we have it, DRS taking the second one. Beautiful, beautiful stuff coming in. Great Erangel all together this time again.
And yeah, I mean, I was hoping I mean, I was kind of guessing, not hoping, that the side of RQ might actually be the ones coming out on top, but looks like that wasn't the case. Looks like, there are the teams stepping up. It is the RS once again. 3-1-3 also had a really good chance. There were just 3 players surviving, 3 players jumping in, 2 players surviving towards the end. Cosmos was isolated there. Irfan did have a really good chance, but once again, the numbers coming into play every single time. Towards the last zone, towards the last few zones, we usually see the numbers overwhelming the opposition, right? So any team that has Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Panda? Let's see into the upcoming one on the map of Miramar, because we have seen fights getting calibrated really soon into the early games, right? I mean, especially on the map of Wrangel, it was really fast and rapid, right? So let's see what is going to be the case scenario on the map of Miramar, because Wrangel, it was really fast and rapid. I did really love the first match, right? Because it was really balanced and smooth. Wrangel, somewhere around in between, it was kind of being way too boring, because we haven't seen any sort of fights and the rotation clash happening. I mean, it's just not grand finals yet. It's just those qualifiers coming in and those playoffs phases for phase number 2. So this is it. I mean, we are done with the second match. Let's see into the third one, which team is coming up on top and taking that winner with the chicken dinner. But congratulations for VOIN Esports and team DRS Gaming taking that winner chicken dinner. But in the first match, we have seen the match rankings. Team RQ, they were having the highest number of points. They were having, I guess, 22 or 24 points in between. I just can't remember it, but they were having 20 plus points. So yeah. DRS Gaming, on the other hand, they're not having that higher number of elimination points, but they're having the chicken dinner. So in the match rankings, I think DRS Gaming is not doing the top on #1 right now. There might be some other team, maybe a Boom Esports, right? I mean, all of the 4 players of Boom Esports, they were just reigning supreme. So that could be the case scenario, but I'm super duper excited to see the match rankings right now. And Edge, there's one more thing for the audience. We are going to be announced the second winner of our giveaway. So that's one more interesting thing. And Edge, I know that you did participate in the giveaway as well. Imagine you being the winner. Being lucky somewhere, it's new for you, right? Yeah, I mean, that's what took a really long time for me there in between. I was very carefully making sure I typed in the correct character ID there, because sometimes one number here and there, and I mean, that's a free pass for someone else if you're the one winning there. So yeah, once again, any one of you entering the giveaway, just be a little extra careful while you are entering your character ID out there. But yeah, we will definitely be taking a look at the winner coming in from the giveaway as well. But that is for later. For now, let's take a quick look at the highlights of what happened here on the map of Wrangel, the second match here in phase 2 playoffs, as we did have this beautiful clutch coming in. Venom was so good. I mean, you can see him panicking for a little bit, but then at the end, I believe that was the last bullet that actually connected onto the player on the side of ASI 8. ASI 8, they're going to be beating themselves up regarding that. That was an unfortunate turn of events, but great start for T2K. Oh man, absolutely. And 4 tribes, especially the sprays from this team, it was insane. And there you go. I mean, BTR team DRS just reigning supreme and just eliminated team BTR like that. And those grenades on the side of T24 OP, and that it was great, right? Team Secret, that one single man solo standing, T24, he was able to do that 1v4, but that 1v3, it was insane. I had to say the kudos to the player. But SKYFORCE, Boom Esports, every team, they actually played amazing. And especially I was talking about Boom Esports and this fight against Team Secret, but I somewhere thought that Lolbu, he might actually pull that fight out, but that wasn't the case scenario. And the grenades, I mean, RQ, the textbook players coming in, reigning supreme. Yeah, things went down really quick towards the end. You did see a 3-1-3 there, getting a beautiful squad wipe towards the end. And now, they tried their best to get the chicken dinner there, and DRS was just at the right time, at the right moment. And
Yeah, the right place, of course. And they were the ones coming out on top. They will be the one with the chicken dinner. So let's take a quick look at their stats coming up. Killer YT with 2 eliminations, 1 elimination for Frag, 1 for Cyclone. And no nation. I can't really. Oh, that is the smiley face, isn't it? That is the smiley face player Yeah, there coming up. So DRS, great start, but yeah, things they will need to keep pushing it more and more. This is not enough for them. This is, I mean, they definitely have a lot of more potential. We all know it. So we're still waiting to see them go berserk. At the moment, BLUG is going to be the MVP coming in from the side of Team Secret. 23% headshot, 15% body, 61. I mean, is leaning towards the leaning more towards the lower body there. 6 eliminations, 518 damage, no assists, 20 minutes of survival time, 6 knocks, and 434 heal. That is the situation that the MVP is in right now. Exactly. I mean, BLUG, he looks deadly as well, and he's deadly in game as well. And these are the top 4 players. Yummy with 4 elimination, Venom, and I mean, we do know that Venom doing that 1v4 against ASIT, he's posting those 4 eliminations. Small will be taking 4 eliminations as well. So Edge, we can say actually 2 of the players of Boom Esports joining into the top 4 players. But after this, we'll be having a look on the top 4 teams and teams to watch out into the upcoming one. And these are the teams to watch out, players and teams playing in group blue and green. Boom Esports, Team Secrets, RIQ, and VOIN Esports. And the domination I was talking about, Boom Esports, I mean, they're having 11 eliminations. So into the in the match rankings, I guess they did surpass DRS Gaming, or maybe Team Secrets. They surpassed DRS Gaming. I think they might have. You're definitely right about that for sure. As we have the match summary on our screens, 67 eliminations coming in total, 5 grenade eliminations, 3 airdrops looted, 2 vehicle eliminations, and 9,088 healing done overall. And the longest elimination this time, almost 400 meters, coming in from Falak at 391 meters. Yeah, Falak taking the spot and the tag with the longest elimination. And there we have it, the match rankings. Oh man, we were predicting and speculating that Team DRS, they got dethroned, but no, they were having 6 elimination points, and they were having 10 points for the placement, and they're doing the top right now, do not get me wrong, but I somewhere around felt that time Boom Esports was the team that taking that spot of the first place. But Chicken Dinners are the one. I mean the team thinking that William and the Chicken Dinner are doing the tabletop in the match rankings. Team Boom Esports taking 15, Team Secrets will be taking 14, Team RQ will be taking 12 points, Team 313 Esports taking 11, SKYFORCE's VOIN Esports, Team Phoenix Rise, and all of them, they got eliminated way too early into this match. That is true indeed. Yangon Galacticos especially, I mean, with 0 points again, not looking so good. But the overall ranking, this is what it looks like. RQ sitting on top still, 33 points in total. DRS with that Chicken Dinner will be moving up to 26 now in second position. Boom Esports, 24 points for them, 15 beautiful points into this one coming in. VOIN 15 in the first game, 7 in the second, brings their total up to 22. 21 points for Team Secret. WARGAYE on 17, 15 points for 313 Esports. 52 Esports on 15 points as well, 14 for ASI8 as they make to the top 9 at the moment with only 1 point into this one. I mean, that was quite unfortunate the way they got taken down there, but the solo man surviving. The one player on the side of T2K, that was Venom. Phoenix Rise is on the rise with 12 points, 10th position. SKYFORCE on 8 points for BTR. 4th Thrives at 7, along with HKG on 14th position. Flash 15.6, 6 points on 15th position. T2K on 5th position, 5 points, 1 point for men's and Yangon Galacticos. As I said, no points whatsoever for them, unfortunately. Exactly, this is it, and this was the second page of the overall rankings in the phase qualifiers, and these are the playoffs. But after this, maybe we will be having a look on the overall MVP, because Team Secrets UK will be taking 8 eliminations. Fast Mode is a new way to work with Agent for when you need precise edits instantly. Simple Player from one player from Vietnam. So I mean, great performance. But after this edge, we will be starting off strong on the map of Miramar.
Miramar is definitely gonna be something different, something to watch out for sure. As we will be taking a look at the winner. No, not yet. Okay, first it's fan favorite teams, and it's gonna be Four Tribes and DRS still leading the charts. And once again, guys, for you to vote for your favorite team, all you need to do is type in hashtag your favorite team's team tag in the chat. So a count will be, a vote will be counted against them. And the top two teams, the two fan favorite teams, will be moving on to the grand finals, regardless of how many points they have in the overall standings. Oh yeah, exactly. That's the case, and you can just vote for your favorite team. But Edge, after this, we will be witnessing that lucky winner in the giveaway, and let's see which player. I mean, we don't know the name, and we won't be able to see the the character in game name of his. But congratulations being the winner. I mean, and in the second match of Erangel, congratulations on being the winner of the Royal Pass. And if audience don't know, there's an active giveaway going right now on this channel and on this broadcast. All you have to do is just type _ and giveaway, and all there will be a link into the comment section. Tap on the link and you'll be redirected to a different website and on a different page, and you have to tap on the image, and then there will be some of the questions. So you have to answer the questions, and you have to type your character ID, in-game character ID, and your real name, and that's it. These are some easy and simple giveaway rules and steps, so follow them and participate yourself into the giveaway. Let's see into the upcoming one who is going to be our winner, but congratulations winning these royal passes, and we did give away 2 of the royal passes. Already done. We have 4 more, not just in terms of the giveaway, but in terms of the matches as well, in day number 1 of the phase 2. Now, as you said, we will be heading down to Miramar. We've seen Rondo, we've seen Erangel, and it was kind of, it went as expected. Rondo was as aggressive as ever, as chaotic as ever. The map of map of Erangel, though, it went quiet in between, but we did pick up the pace towards the end. It was more textbook than Rondo, and going into Miramar now. Once again, I think we will have a couple of drop classes really early, but apart from that, once again, we will probably be not witnessing any fights for the first 10, 12, 13 minutes as Stage 4 comes into play. That is when we probably be looking at some more fights coming into play, some more brawls between those teams, and hopefully we get to see some sniper rifle action. I'm talking about the bolt action this time. Phase 1, we didn't really see them in play. Maybe a couple of times that AWM was picked, but apart from that, we didn't really get to see sniper rifles in action. We did get to see a lot of DMRs though in the grand finals, thanks to the Mini 14s. But now, let's see if this Miramar will give us some sniper on sniper action. As Rondo went in the favor of VOIN, DRS did go in the favor. DRS were the ones coming out on top on Erangel. As we move to Miramar, do you think we will see a repeated winner, or do you think some other team might be the one coming out on top? Alright, let me take a test of yours. Do you remember Weibo Gaming in Asia Battle was Chapter 2nd from that team? Like, do you remember Weibo Gaming? Yeah, I believe they're the Chinese team. Yeah, and do you remember Weibo Order, man? If you remember, he started that meta of using that K9 and AWM in Asia Battle was Chapter 2nd, and he started using M24 as a AWM, and he was wielding all those bolt rifle action on the Miramar just insanely. So I wish Weibo Gaming, and especially Order, because on the map of Miramar we won't be able to see those bolt rifle action coming in, and those typical one-shot long range weapon and fights. But it's all about the close range, but we will be seeing those Mini 14 and 8x coming in. But what about you, man? Do you miss Weibo Gaming? Because I do, and especially Order, man. I hope they were here. To be really honest, I do miss Weibo, but the one team I miss more than them, from Chapter 2, that is unfortunately is not making it to Chapter 3, have to be Thunder Talk. I mean, they've been really amazing, and their recent performances as well coming up were absolutely dominant. I would have loved to watch them play, but maybe later on, maybe in Phase 3, or maybe in Chapter 4, or maybe in any of the next chapters, we'll probably get to witness them. As of now, we will be getting to witness the beautiful map of Miramar in play as the flight
part will be coming on our screen, ladies and gentlemen. We will be taking a flight starting at Muda, somewhere towards ending towards Walid Al Mar, and this is not going to be an easy flight path for a lot of these Yeah. teams that want to go towards Puerto Paraiso. For example, Patona could be crowded later on, but at the moment, once again we'll be looking at Picaro because that's where 4 tribes are going. Yeah, 4 tribes. They always drop on the heart of the map, which is Picaro. Los Leones being the biggest city of the map, and we know Los Leones के region में बहुत सारी teams उतरती हैं, and वहाँ पे at least हम लोग को एक first 4v4 की battle देखने को मिलती है. But देखते हैं Los Leones की city पे कौन सी ऐसी team रहेगी या फिर कौन सी ऐसी teams रहेंगी जो हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेंगी. But we'll be having a look at the team 4 tribes because is group green versus group blue के अंदर edge, if I'm not wrong. पिछले फेज के प्लेऑफ्स के अंदर हम लोगों ने देखा था 4 ट्राइब्स कभी ना कभी तो टकराव ले रही थी किसी ना किसी की टीम्स के अगेंस्ट, बट ये जो जोन है बहुत ज़्यादा डिसेंट, रोटेशन क्लैशेस बहुत ज़्यादा कम रहेंगे एंड टीम्स आर मेजॉरिटी जो टीम्स हैं वो जोन के अंदर ही रहेंगी. बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन DRS गेमिंग को. स्किलावाइटी शुरुआत में यहाँ पर डाउन होते हुए स्टिल का फटका उनको पड़ेगा और चार्ट से वो लोग जाएंगे एंड नॉक ऑफ हो जाएंगे. बट किलावाइटी DRS गेमिंग इज नॉट अ ग्रेट स्टार्ट. T2K esports इरांगल के मैच पे 70 में यहाँ पर ASI esports के अगेंस्ट फाइट लेते हैं और मिरामार में ये लोग फाइट ले रहे हैं DRS गेमिंग के अगेंस्ट. और T2K esports दोनों ही नेपाली टीम्स फाइट लेती हुई एक दूसरे से, और आई गेस DRS गेमिंग दे आर हैविंग दैट अपर हैंड एडवांटेज नाउ. हालांकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं RRQ चारों प्लेयर्स यहाँ पे जिंदा हैं एंड एक ही एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ पे उनको मिला है. RRQ ये कौन सी ऐसी टीम रहेगी जिनके अगेंस्ट ये लोग फाइट ले रहे हैं. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वालेद अल मार के सिटी या फिर रीजन के आसपास यहाँ पर फीनिक्स राइज वर्सेस RRQ के बीच में जो 4v4 की फाइट है वो इनिशिएट यहाँ पर हो चुकी है. और देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और DRS के ऊपर एक और टीम आ चुकी है और ये रहेगी हमारी टीम सीक्रेट. तो टीम सीक्रेट यहाँ से मजीद गन्स को पकड़ा और यहाँ पर आया सीधा फाइट लेना स्टार्ट कर दिया DRS गेमिंग के अगेंस्ट. और DRS आई मीन पहले यहाँ पर T2K esports के अगेंस्ट फाइट ली, किलावाइटी का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा. फिर उसके बाद में हम लोग को देखने को मिला कि न्यू प्लेयर और वो जो एक और प्लेयर है जिनका नाम स्माइली, चलिए हम उनको बोलेंगे, सो स्माइली एंड न्यू प्लेयर ड्यूमन सर्वाइवर है. उसके बाद में DRS 3 ही एलिमिनेशन लिए T2K के esports के ऊपर और उसके बाद टीम सीक्रेट्स एक बहुत ही ज़्यादा रोटेशन दिखाते हुए इस रीजन में. और उन लोगों को पता चला जैसे ही यहाँ पर फाइट हो रही है भेड़ियों के जैसे यहाँ पर आए टीम सीक्रेट्स के प्लेयर्स और फाइट लेना स्टार्ट कर दिया DRS गेमिंग. देखिए एक और प्लेयर यहाँ पर डाउन, न्यू प्लेयर आर गॉन एंड देयर वी हैव द सोलो सर्वाइवर of DRS gaming is going to be that smile person who's holding and wielding that astral key. But I guess guys it's not enough. In DRS gaming they are done and dusted. 313 esports, VOIN esports ये भी एक और यहाँ पर फाइट इनिशिएट हो चुकी है. बट RRQ वर्सेस फीनिक्स राइज दोनों ही टीम्स अप क्लोज पर्सनल M249 का कहर यहाँ पर मचाते हुए और डीपी से यहाँ पर स्विच करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे. TP फर्स्ट बुलेट एक्यूरेसी इज वेपन की. Booking.com ऐप पर अपने लिए बेहतरीन होटल खोजें. बहुत ज्यादा प्यार रिटेलिएशन और टीम फीनिक्स राइज यहाँ से बाहर होती हुई चारों खिलाड़ी और चारों खाने चेतन प्लेयर्स के लिए और 4 ही एलिमिनेशन यहाँ पर मिलेंगे हमारी टीम RRQ को. This Indonesian team, they are hopping up strong and they are getting the spot, but we can see AMINZ esports. I mean, man, oh man, सभी के सभी पाकिस्तानी टीम्स यहाँ पे फाइट ले रही है और इनिशियल बैटल के अंदर फंस चुकी है. आज तो ये पाकिस्तान का जो कहर मच रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. AMINZ esports के गोकू बॉट यहाँ पर डाउन होंगे एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी एक भी ऐसी पाकिस्तानी टीम नहीं है जो एक पैसिव गेम के साथ या फिर अप्रोच रखना चाह रही है. पाकिस्तान के हर एक प्लेयर, हर एक खिलाड़ी या फिर हर एक टीम वो लोग शुरुआत से ही फाइट ले रहे हैं. मजीद फाइट के अंदर यहाँ पर आएंगे और कुछ प्लेयर्स ने या फिर कुछ टीम्स ने खामियाजा भी भुगता है, बट एक नज़ाकत से खेलते हैं हमारे सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स और अच्छे तरीके से यहाँ पर बरकत करेंगे इस गेम के अंदर भी. HKG हांगकांग टीम, एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हुआ है. They're going to be feeling that regret why they lost that player.
But 3 months standing, it's gotta be the situation for Team HKG और AMINZ esports. शायद से स्पॉट किया गया है प्लेयर को. A side प्रीतम वर्सेस टीम फ्लैश. ये एक फाइट यहाँ पर स्टार्ट होती हुई. I'll be having a look on that क्योंकि A side K2 हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्मेशन दिखाते हुए टीम फ्लैश वर्सेस A side esports. एक 4v4 बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है. टीम फ्लैश द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड फेस वन द ग्रैंड फाइनल्स. एक 4v3 बैटल के अंदर 4v4 की फाइट हालांकि स्टार्ट हुई तो थी, लेकिन A side esports उन्होंने पहला एलिमिनेशन यहाँ पे पॉइंट लिया. K2 ने फिनिश ऑफ दिया. प्रीतम ने यहाँ पे नॉकआउट निकाला. एक प्यारी सिनर्जी और एक प्यारा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर एसआईटी स्पोर्ट्स शुरुआत में दिखा रहे हैं. ये एक पाकिस्तानी टीम है जिसको मैं बोलूंगा एक सेंसेशन बनते हुए, और सेंसेशनल प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान के लिए एक आइडलाइज कर रहे हैं. लाइक पाकिस्तान के जो आगे आने वाले प्लेयर्स हैं जो ई-स्पोर्ट्स के अंदर घुस रहे हैं, दे आर बिकमिंग द आइडियल्स. बट हम लोग देख सकते हैं K2 यहाँ पे डाउन होंगे. आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ा जा रहा है. फील की जा रही है. वो यूएमपी को पीछे से यहाँ पर कवर आया एंड 2 प्लेयर्स एसआईटी स्पोर्ट्स के डाउन. पोज ने यहाँ पर कंफर्मेशन भी दिखाया. एसआईटी स्पोर्ट्स हालांकि यहाँ पर ये पाकिस्तान से टीम आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एक चीज और एक फैक्ट जिससे हम दूर नहीं भाग सकते, जो टीम फ्लैश है. टीम फ्लैश बहुत ही ज्यादा भयंकर परफॉर्मेंस थी फेज 1 के अंदर और कयामत बिखेर दी थी उन लोगों ने. और टीम फ्लैश अभी के लिए एसआईटी स्पोर्ट्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग. बट ये जो रिवाइव किया जा रहा है, यही मौका है प्रीतम भाई के लिए. यही मौका है प्रीतम के लिए आगे की तरफ बढ़े और शायद से टीम फ्लैश को यहाँ से फिनिश ऑफ करके लॉबी का रास्ता दिखाए. बट नहीं, टीम फ्लैश में रिटेलिएशन जरूर दिखाएगी. द लास्ट 1 प्लेयर, बट डैमेज आ रहा है क्रिप्टो के ऊपर भी. क्रिप्टो बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं. शायद से मॉली का जो कनेक्शन है वो पूरा हो चुका है. वी का नॉकआउट हो चुके हैं और ये जो फाइट है बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है. रिवाइवल भी यहाँ पर हो चुका है टीम फ्लैश के उस अकेले प्लेयर का. आगे की तरफ बढ़ेंगे. टॉप्स ने अगर यहाँ पर ये फर्स्ट एड पॉप कर ली तो शायद से एसआईटी स्पोर्ट्स को ये जो फाइट है बहुत ज्यादा बड़ा लंबा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. और देखते हैं हम लोग टीम फ्लैश के जो टॉप्स है उन्होंने फर्स्ट एड भी पॉप कर लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑडियंस. और अब ये जो फाइट है स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. ग्रेनेड यहाँ पर आता हुआ क्रिप्टो. एक और फाइट रिटेलिएशन आएगा, बट नहीं, K2 नॉक जरूर हुए थे. एसआईटी स्पोर्ट्स नॉकआउट करेगी एंड फिनिश ऑफ करेगी डिफेंडिंग चैंपियंस को. चलिए अब हम लोग एक बार मिड फेस के अंदर जरूर पहुंच चुके हैं. एंड हम लोग को पता है कि मिड फेस के अंदर ये जो फाइट्स और रोटेशन क्लैशेस थोड़ी बहुत कम हो जाती है. बट एक बार हम लोग जरूर नजर डालेंगे एसकेजी के अगेंस्ट भी, क्योंकि AMINZ esports ये फाइट में आते हुई स्पॉट किया जाएगा प्लेयर को. नॉकआउट यहाँ पर लेने का जरूर ट्राई करेंगे. ग्रेनेड बहुत अच्छा, बट नहीं, खाली बहुत अच्छे तरीके से पैनिक रूम में जाएंगे. बट यूएमपी का कहर शॉर्जन मचाते हुए, और यूएमपी और क्लोज रेंज के अंदर SMG, आई मीन क्या ही कहने हिफायर्स का. मेरे को क्लोज रेंज के अंदर हालांकि AKM ज्यादा बेटर लगती है, बट यूएमपी SMG सब मशीन गन्स क्लोज रेंज के अंदर हम लोग को पता है बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है. थाल ही जाएगी वॉकआउट होकर सीधा फिनिश ऑफ भी कर दिया गया है. AMINZ esports का एक आखिरी प्लेयर जिंदा रहेगा और किस नजाकत से एक 1v2 कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि मजीद प्लेयर जिंदा है, ज्यादा तो नहीं, बट HKG यहाँ पर जिंदा जरूर रहेगी. और AMINZ esports ये जो फाइट है यहाँ पर शायद से एक जो डिसएडवांटेज है इन लोगों के ऊपर वो बनता हुआ. हालांकि मैं एक आप लोगों से सवाल पूछना चाह रहा था, जो भी ऑडियंस हम लोग वहाँ पे देख रही है. होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग टुडे, द डे इज गुड. सो मेरा सवाल रहेगा कि हम लोगों ने शॉटगन्स के बारे में बात किया कि आप लोगों को कौन सी शॉटगन पसंद है, DBS पसंद है, एस्ट्रल के पसंद है. मेरे को आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों को कौन सी असॉल्ट राइफल पसंद है. जरा बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर. छोटा बहुत हम लोग इंट्रैक्शन रखेंगे आप लोगों के साथ में भी. मेरी फेवरेट तो UG रहेगी. सो आप लोग भी बताना आप लोग की फेवरेट असॉल्ट राइफल कौन सी है. सो प्लीज डू लेट अस नो. एंड चलिए वापस एक बारी गेम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोगों की फेवरेट ट्रेन हम लोगों को देखने को मिलेगी, जो रहेगी हमारी टीम फोर्थ राइव्स. और वोटिंग में भी इन लोगों ने कहर मचा रखा है, और स्पेशली मैं बोलूंगा फैंस ने कहर मचा रखा है, क्योंकि आप लोग हमारी टीम फोर्थ राइव्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. 4000 या 5000 से ज्यादा वोट्स अभी इन लोगों के पास में है. सो फोर्थ राइव्स एक रोटेशन क्लैश में यहाँ पर फंसते हुए, एंड फोर्थ राइव्स का ये जो स्पॉट है रोटेशन के अंदर, जब भी जोन इस रिज या फिर हिल पे होते हैं तो फोर्थ राइव्स हमेशा इस स्पॉट के ऊपर आती है और एक हायर
ग्राउंड का एडवांटेज लेना चाहती है T24 के ऊपर। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्प्रे आते हुए अगर यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। टीम सीक्रेट क्वालिफायर्स के अंदर और प्लेऑफ्स के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरीन खेलती है। बिल्कुल क्लोज रेंज में ये लोग आते हुए T24 ओपी पॉप अप करेंगे उस फर्स्ट एड को। टीम सीक्रेट्स के सभी प्लेयर्स थोड़ा बहुत पीछे जाते हुए, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं रहेगी T24 के लिए एंड फोर्थ ट्राइब्स के प्लेयर्स के लिए। देखने को मिलेंगे हम लोग को फलक, हुज़ैफा, T24 ओपी और IQQ। बिल्कुल शांति तो बन रखी थी बट IQQ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इस शांति का नजर आना बदलते हुए, और ये जो गेम है शायद से टीम फोर्थ ट्राइब्स के लिए क्या एक कहानी लेके जाएगा वो देखने वाली चीज रहेगी। मोलोटॉव्स यहाँ पर डालते हुए, ग्रेनेड्स यहाँ पर डालते हुए जेरस को स्पॉट किया गया। मॉली यहाँ पर जेरस के हाथ में भी रहेगी, एक्चुअली मॉली नहीं स्मोक के अगेंस्ट यहाँ पे एक्सचेंज किया जाएगा। फोर्थ ट्राइब्स के चारों प्लेयर्स भेड़ियों के जैसे यहाँ पर कवर करते हुए चारों एंगलों से और चारों दिशाओं से यहाँ पर फोर्थ ट्राइब्स के खिलाड़ियों ने टीम सीक्रेट के ऊपर नजर बना के रखी है। सो कोई भी एंगल यहाँ पर टीम सीक्रेट के लिए खाली नहीं, और बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है टीम सीक्रेट्स के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हुज़ैफा के हाथ में भी ग्रेनेड, T24 के हाथ में भी ग्रेनेड, और देखिए हुज़ैफा ने अपने आप को ही नॉकआउट कर लिया। रिवाइव यहाँ पर जल्द देना पड़ेगा क्योंकि T24 ओपी रिवाइव करेंगे और टीम सीक्रेट इंटेल कवर करी गई है और किल फीड को यहाँ पर बकायदा रीड किया गया है। ये जो रिवाइव है यहाँ पर आता हुआ रिवाइव पूरा हो जाएगा शायद से, बट ये जो फलक का ग्रेनेड है और ये जो ग्रेनेड आ रहे हैं फलक की तरफ से पीछे से, बिल्कुल सही, द मैन विद द गोल्डन हैंड फलक यूपी। अब लोगों को पता है फलक अगर ग्रेनेड की पिन एक बार ही पिन आउट करेंगे और फेंकेंगे तो ग्रेनेड से नॉकआउट जरूर लेके जाएंगे। ग्रेनेड ही नहीं, आशु M16 से भी अपना कहर मचाते हुए, और एक और यहाँ पर ग्रेनेड की तरफ पिन करेंगे। दूसरा ग्रेनेड यहाँ पे जाता हुआ, अच्छा खासा डैमेज, फलक यहाँ पे नॉकआउट होते हुए। IQQ DPS से यहाँ पे पुशिंग करेंगे आगे तरफ बढ़ती हुई। जो फाइट है टीम फोर्थ ट्राइब्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आती हुई, शायद से एक अपॉर्चुनिटी और ओपनिंग है फोर्थ ट्राइब्स को एलिमिनेट कर सकती है ये टीम सीक्रेट को। खामियाजा सिर्फ फलक का रहेगा। हुज़ैफा ये ग्रेनेड बहुत प्यारा, कुछ स्टेप्स सुनेंगे, ग्रेनेड छोड़ेंगे कि MJ भी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी गलती हमारी टीम फोर्थ ट्राइब्स लेगी नहीं क्योंकि उन लोगों को पता है पेशेंस इज द की। अगर 3 प्लेयर यहाँ पर टीम सीक्रेट्स के डाउन कर दिए तो एक और डाउन कर देंगे, साथ में फाइट लेंगे। ये एक और ग्रेनेड हुज़ैफा डालेंगे, स्पॉट किया जाएगा प्लेयर को। लॉल वो ओलिम ट्रेड पर 280 रुपए सब कुछ बदल सकते हैं। रुकें, सिर्फ 280। यहां पर फोर्थ ट्राइब्स ने दागे टीम सीक्रेट के ऊपर और यहां से एलिमिनेशन लेती हुई एक क्लीन फाइट, बिल्कुल नजाकत, एलिगेंट, बहुत प्यारी फाइट थी। और टीम फोर्थ ट्राइब्स प्यारी परफॉर्मेंस, 5 एलिमिनेशन यहां पर टीम फोर्थ ट्राइब्स को मिलते हुए। AMINZ स्पॉट्स स्पॉट करेंगे प्लेयर को, 313 माफिया को डाउन किया जाएगा एंड फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा उनको। AMINZ स्पॉट्स 2 प्लेयर इनके भी डाउन यहाँ पर हो चुके हैं, और तुरुक और कारहू दोनों सर्वाइवल रहेंगे। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर इन लोगों के पास में भी आ चुके हैं। और अभी तक आप लोगों ने गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो एक बार चैट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क और गिव अवे जरूर लिखना, और आप लोगों को एक पिन कमेंट में लिंक जरूर देखने को मिल जाएगा। भले आप वो ना लिखिए बट एक बारी पिन कमेंट में लिंक पे टैप करिए एंड पार्टिसिपेट करिए गिव अवे के अंदर। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप लोग आंसर करिएगा। और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बोल रहा हूँ सभी लोगों को कि जाके जो आपकी PUBG मोबाइल की कैरेक्टर है, कैरेक्टर आईडी है, उसको बिल्कुल सही तरीके से लिखिएगा। कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए डिजिट्स के अंदर। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है सो हर मैच में हम लोग एक गिव अवे कर रहे हैं और विनर भी अनाउंस कर रहे हैं। गिव अवे के अंदर रॉयल पास है, आप लोगों का फेवरेट, मेरा भी फेवरेट। आई मीन मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया है, मे बी मैं भी कर लूँ, क्या पता। बट आप लोग जल्दी से जाइए, मेरे पार्टिसिपेट करने से पहले आंसर करिए उन क्वेश्चंस का और गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए। स्काई फोर्सेस की तरफ हम लोग एक बार जरूर नजर डालेंगे। एंड लेट्स सी एच कि स्काई फोर्सेस एंड टीम 52 ये जो रोटेशन क्लैश के अंदर टीम्स क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। With the way things have turned out, first things first, I'm so sorry. I had a minor technical difficulty again. But
Yeah, looking at the way things are going now, they have a major lead now built up for the side of RRQ as we have WARGAYE getting taken down and eliminated in position number 12. One elimination is all they have. And, well, Yangon Galactico still surviving, so I'm kind of excited to see if they can actually close out the game on a decent position here or not. 52 with 4 players standing. We'll try to take down the players on the SKYFORCE. SKYFORCE, as I said, is another squad that I kind of was hoping to see in the grand finals. Unfortunately, we didn't get that. So maybe this time around towards phase 2, we will be getting to witness it. But boom! What a grenade coming in. And not just that, it's ASI8 also joining the fight and trying to take down the players inside of 4 tribes. And that grenade is insane. We'll be pushing away T24 and Falak. And now Huzaifa standing by himself as IQQ will be stuck as well. He might get taken down. He comes out in the open. We'll be using that DBS to good use. We'll be taking down one beautiful movement coming in from IQQ there, I'm sorry. As Huzaifa, T24 and Falak, all 3 will drop. And now IQQ with a lot to do all by himself. No recalls whatsoever. 6 eliminations for the squad as IQQ with the DBS in hand. He definitely has the caliber, the potential to do this. He does have the potential, the position and the weapon for this one as well. Level 3 helmet, level 3 armor to go for this one. Yangon Galacticos with 2 players standing. IQQ. Well, not going to be easy, but if there's anyone who can do this, it's him. He goes for the loot. Will be equipping, getting some more, actually gets himself a smoke. And now he can deploy that to get into a better position, cooking up a grenade, trying to see if he can find an angle onto anyone. This zone will be coming into play as well. Has to be careful. They're towards the other part of the other side of the building, and he will be taking a bit of damage, or no, not exactly. 50 esports, meanwhile, they will be getting eliminated. The bandages are there, so for TIQQ, he doesn't really worry about that. Medkit will be coming in. There you go. He will survive for now. But the fight is not over yet. He's not out of danger just yet. It's not just Yangon Galacticos. It's also ASI8 in the picture. That's a beautiful grenade. Will be doing a bit of damage. The DBS comes out. IQQ. He will be able to take him down, but immediately gets taken down. The grenade that was thrown before he went down by the player of a Yangon Galacticos. Beautiful play there coming in. A little bit of drama towards the end as 4 tribes. They get taken out. Yangon also will be going out of the party. Now with 8 teams, 20 players still in the server, 18-minute mark hit, stage 5 circle will be coming into close in the next 30 seconds. BTR and SKYFORCE, this is a fight that is still being prolonged. Looks like both of these teams, they desperately want to take down each other. They need those points. On the side of BTR, no points into this one. SKYFORCE, they have 5 already, so they must be feeling a little confident. But Kyovo with a grenade to the face of Godless 79 will be dropping him down. One player outside of BTR is bleeding as well, so they got to be careful with that. But SKYFORCE, they clearly have the advantage coming into this one. A man advantage, that is. And the momentum is also in their favor. Those grenades are reigning supreme. And Sanche will drop one more. Kyovo now closes the distance. Pulls out the M4 up close, a personal hip fire. He's playing this out of his mind, but he will get taken down regardless. But SKYFORCE on the verge of getting eliminated. Sanche is the only one standing, and 2 is Foreman will be the one dropping down the last player on the side of SKYFORCE. Oh my he puts the in the God. coffin. He will go for the heal. BTR. They will be the one eliminating SKYFORCE. Well, The freaking defending played. champions. The defending champions. And for a reason. For a reason. 2 of the players of BTR surviving BIGETRON by vitality. The performance we just wanted to see. There's one more team coming up close personal, and this is BOOM esports mall. Down यहाँ पर किया गया है, and शायद से knock off करेंगे, but no, शायद से BOOM esports eliminate तो हुई, but उन्होंने make sure किया कि BOOM Esports का जो BTR का वो जो एक अकेला खिलाड़ी था जिसको नॉकआउट किया, उसका पॉइंट अपने हाथों खुद लिख के जाएंगे. और देखिए, Team BTR, they lost one, but BOOM Esports, they made sure they took one. One more point before going down. I mean, he was in such a situation where he had to, take a decision, and the decision was good. The execution was almost there as well, to be really honest. I mean, BOOM are going to be really happy with that. They would have gotten one more finish and an extra placement point as well.
They'll be happy with this. Not bad, not bad. 5 elimination points overall going into this one. 29 points on the overall standing now. Jumping up to third position, maybe even second. But we will wait and see at the end what their position is going to be. But now, top 13 players. Yep. I mean, Edge. I mean, this is the initial day of phase second. But do you see the matches, man? These guys, I mean, all these players and all the teams, they're taking those fights really instantly. And all of them, they're coming into this fight as that is because in phase 1 playoffs qualifiers, we haven't seen this thing happening because there were really intense battle happening throughout the whole time. I mean, there were those 4v4 commotions happening, but Edge, this fast, this instantly, this is insane to see. That is true. This Miramar is turning out to be an exciting one, turning out to be a chaotic one as well. I mean, we did get to see a lot more action than expected. And the Rondo itself, I mean, we started off really, really strong. So I think the Rondo set the pace for the rest of the games here today. And it was really amazing to witness the 3 maps. We are only going to be done with 3. We still have 3 more to go into today. So it's only going to get better from here on forward. जी बिल्कुल एंड RRQ कोई भी खामियाजा इन लोगों को नहीं भुगतना पड़ा क्योंकि मजीद प्लेयर्स इन लोगों के आसपास जिंदा तो है एंड जिस नज़ाकत से यहाँ पे ये जो रोटेशन लोगों ने दिखाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ RRQ के बारे में, एक नॉकआउट यहाँ पर आता है और जेनफोर्स यहाँ पर डाउन हो चुके, स्प्रेज यहाँ पर BTR की तरफ से बहुत सही। क्यों वो सोलमन सर्वाइवर तो है जो सबसे पहले अपना थीम कार्ड कलेक्ट करेगा वही जीतेगा। तो क्या ख्याल है, अभी ट्राई करना चाहते हो? थोड़ा लैग कर रहा है, अभी बताती हूँ। और एलिमिनेट हुआ है लॉबी में, बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं SIT स्पोर्ट्स प्रीतम बहुत प्यारा नॉकआउट, लैपर को डाउन करेंगे, जेनफोर्स को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। SIT स्पोर्ट्स के पास में एक अपर हैंड का एडवांटेज। They have it for now. Can they capitalize is the question. I think Dragos will get taken out. You're definitely right about that. BTR, you were the only one standing. With 5 eliminations, they'll be happy as ASIA. They will get themselves an extra point. Kiowa has given away his position. Is this a wise play? That is the only thing that is in my head right now. He's the last man standing. He would probably want to survive longer, right? Play for position points? Yeah. Alright, Hedge, we're down to our top 6 teams, by the way. And it's just 6th zone, and the stage is just 6th. So, I mean, let me ask you, what do you think? Which team is coming up and taking that winner with the chicken dinner? We are down to our top 10 teams. I mean, top 10 players and top 6 teams. What do you think? Which team is coming up strong and taking that chicken dinner in this match? At the moment, there are 3 Pakistani teams, so once again, I feel that is the reason that's going to be coming out on top. HKG, the last man standing, is going to be Zhao. There's not a lot that he can do with the solo man standing. RQ with only 1. ASI to have 3 players, so I think ASI will be the one coming out on top right now, especially with that man advantage coming into the end stages. We've already talked about this, right? The team with the man advantage coming into the final zones will probably be the one coming out on top, and looks like ASI might just be able to do that again. Exactly, that could be the case scenario. And Team HKG, solo man standing, coming up strong, amazing knockout. He's just pushing up, and he's just surrounded with a lot of players, by the way. HKG, Zhao Jai, being the solo man survivor, can he actually pull this chicken dinner off? It's going to be the question. We can see 2 of the Pakistani teams, 1 Indonesian team surviving, and actually 2 Indonesian team, 3 Pakistani teams. Actually, there are a lot of Pakistani teams today. They're having a good time as well. And Zhao, on the other hand, I mean, he's stuck. He probably can't make his way in. Has to be very cautious. That small window that he has there, space to breathe, open the door to check. Just using it as a distraction, hoping it will actually distract Torek, but that's not going to be the case. He will be found by firing on the side of RQ. 5 eliminations now, 3rd admission for him as we're down to top 5, top 8 players.
Yeah. Top 5 teams. And 3 teams तो पाकिस्तान से हैं, 2 Indonesian teams हैं. So it's just amazing to see SIT Esports, AMINZ Esports, 313 Esports surviving till the end. And maybe हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी टीम आए और चिकन डिनर लेके जाए, क्योंकि उनके नंबर्स ज़्यादा हैं अभी. हालांकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं BTR और RRQ, वो 2 भी इंडोनेशियन टीम जिंदा तो हैं, बट सोलोमन स्टैंडिंग के साथ में एज. सो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए बन चुका है. बट मैं तो देखना चाहूँगा पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान. इंडोनेशियन टीम कैसे एलिमिनेट हो सकती है. स्पॉट किया गया, पीक किया गया. रहमान पूरा ट्राई किया. AMINZ Esports के टॉवर के ऊपर ये जो ग्रेनेड है थोड़ा बहुत प्रॉमिसिंग लग सकता है, बट वो जो प्लेयर है उसने आपको रिपोजिशन किया. ये जो ग्रेनेड है रिपोजिशन होके जाएगा. नॉकआउट यहाँ पर नहीं ले पाया. पता है रहमान को कि प्लेयर बहुत ज्यादा लो है, क्यों ना पुश किया जाए. और ब्रोकन वॉल के पीछे जो ग्रेनेड है शायद से ज्यादा प्रॉमिसिंग लग सकता है. चिप डैमेज यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया गया है. आगे तरफ बढ़ेंगे. एस्ट्रल के से यहाँ पर फिशिंग किया गया. 313 Esports वर्सेस AMINZ Esports. पीछे से कवर भी यहाँ पर आ रहा है, कवर फायर भी यहाँ पर आ रखे हैं. बट RRQ को वो जो सोलमन स्टैंडिंग है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है. BTR का भी जो सोलोमन स्टैंडिंग प्लेयर है, ये लोग बहुत ज्यादा दिक्कतें दे सकते हैं इन प्लेयर्स के लिए. Gotta be careful as Byron is going to get taken down as well. So RRQ now will be gone in position number 5. So we're down to top 4. Make it top 3 as AMINZ is going to get taken down as well. And with 4 eliminations in 4 position. Now BTR, SIA, 313 are the only ones standing right now. And BTR Kiovo is probably going to be, thanking his lucky stars as he will be alive up until now. The last one standing for quite a bit now. They would have had one more player surviving if it wasn't for Boom Esports. But he's holding on to his ground. 5 eliminations. Can they get more? Can they get the chicken dinner? That is the question. ASI clearly have the upper hand with 3 players standing. That is absolutely the case right now. And Team BTR, BIGETRON by Vitality, the defending champions from Asia Battle Wars Chapter 2nd, they are surviving here. And they're getting serious now. Top 3 teams. 2 of the Pakistani team and 1 of the Indonesian team surviving, as we are talking about, right? And now, everything is just so silent. Nothing's happening. Is that K2? He tried to spot the players of 313 Esports, if I'm not wrong, Edge. Oh, he did spot the player, taking some of the sprays. BTR, man, he's out of the zone. He's not feeling the right now. And there we have it. He's pushing up with that fearless mindset. But I don't think so. He will be surviving. 2 of the players taking sprays all together. And we can see Pakistan versus Pakistan. दोनों ही भाई और दोनों ही टीम्स एक ही कंट्री से यहाँ पर आखिर तक बचती हुई और सरवाइव करती हुई. और देखिए जो फाइट है ये रहेगी हमारे 3v2 की बैटल SIT Esports के बाद में. हालांकि यहाँ पर एक अपर हैंड तो है, एक एडवांटेज रहेगा मैन पावर का. और अगर 3 प्लेयर जिंदा है तो शायद से आउट नंबर कर सकते हैं टीम 313 Esports को. बट अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. भले ही वो जो 2 प्लेयर्स है वो कैलिबर रखते हैं, वो पोटेंशियल रखते हैं, डू मैन रह के भी चिकन डिनर पुल करने का. बट SIT Esports वर्सेस 313, वी आर नॉट गोइंग टू बी गिविंग एनी स्पॉयलर्स बिकॉज़ ये जो फाइट है एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक मोड पर चली गई है. One player very, very low though, and that is K2 on the side of ASI. So 313 can actually capitalize and maybe get it. And he will be the first one dropped immediately. Now 313, this is the perfect time for them to actually capitalize and follow up with more fights. As 2 players on the side of ASI will be the only one standing. As make it 1. Preetham's the only one standing. He's out in the open as well. It's going to be spotted. K2, he will go for the revival onto him. And I think the revival will be successful. As for Mars in the hands of Crypto, he's going to be bleeding still. Any grenades will be coming up? No, there's going to be a smoke coming up. But there's going to be 2 players running in. Of course, the person of Preetham, he will get taken on. K2 very, very low. It's going to get dropped. No, he will actually pull it back. 3-1-3. That was an unfortunate turn of events for them. K2 on the side of ASI 8. He got revived, and then guess what? He just revived the hopes and dreams for the entire region and for the team as well. ASI 8. Beautiful chicken dinner towards the end. Man. Wait. Let me just take a moment. And just realize what just happened, man. Let me just decode it, because ASI Esports, I actually felt that they felt short, and maybe the chicken dinner is going in the hands of enemy, and 313 Esports might be pulling it off. But Edge, in the end, they were taking that edge, and what a great match it was. I mean, that was intense. Even if there are not a lot of players and chaos happening in the end,
these players are making sure we have those spicy fights coming in. But ASIT Sports, huge round of applause for the teams and the players, the way they played. Amazing performance. But 313 Esports, this close. They were this close to take that chicken dinner, but there were mistakes. They will be working on themselves for sure, because they do have more days and more matches upcoming, right? Like, they're having 36 matches in total, right? 6 days of performance and then 6 matches per day. So easy maths, I know. But 36 matches is going to be, and we are done with the 3 matches. So 33 matches are remaining for them. Let's see into the upcoming one, can they actually improve themselves? Because there are mistakes and they will learn from mistakes. Let them do mistakes, because making mistakes is a positive thing, but it's always that you should learn from those mistakes. Yeah, I mean, that is definitely something to keep an eye. You don't want to make the same mistakes again and again. That is something these teams are going to be living by, and they probably are going to be coming up better in the next time as well. But what a game this has been once again. At the end, we have seen 2 Indonesian teams, 3 Pakistani teams surviving towards the last few zones. Absolute brilliant performance coming in from everyone once again. An amazing match here on the map of Miramar. We get to witness. Now the circle is done, the first cycle, and now the second circle of the map rotation will be coming in. So Rondo again, Erangel again, Miramar again. With the way things have turned out here on the first cycle, I am very excited for the second one. I mean, I am as well, because it's the map of Rondo, right? Because we know on Rondo there were a lot of those early commotions happening, and all of these teams just colliding all together and having that clash. But let's just have a look at the highlights as well, shall we, Edge? Because we will be having a small recap and brief for the audience joining right now the broadcast in the stream. So you guys don't have to rewind the stream and check the match again. So we'll be showing you that small recap and highlight, because we started off with the fight against Team T2K Esports and DRS Gaming. Both of the Nepali teams started taking those fights, and then Team Secrets making a great third party BTR versus AMINZ Esports. I mean, this fight was amazing as well, but ASIT Esports, the capitalizing against Team Flash, it was insane. It was beautiful. The start there coming in, and Team Flash once again just unable to capitalize, have any follow-ups there as well. They are struggling, and they were struggling big time. 40 as well, they tried their best to come out on top multiple times. I mean, like, there were a couple of fights they did come out victorious, but after that they were also taken down pretty comfortably by the other squad, and this was the elimination coming in to the players. But this is the fight that we were talking about. Both tribes, IQQ barely surviving there, and that the grenade coming in was absolutely beautiful. Kiowa was so scary here when he was pushing in, and 2E's Foreman was the final one taking him down, and then Maul came out in the open at the last second. Kiowa played it perfectly. He would have gone down there as well, because it was very, very low. And as we went down to the last few circles, we had 2 Indonesian teams and 3 Pakistani teams. Absolutely, that was the case scenario, and I mean, Esports coming in this fight and doing that 1v2, that he was really close to do that, but that wasn't the case scenario. And this moment, man, Priyatham, he was just on fire. And 313 Esports, they did make sure to push and rush in, but there we go. I mean, the shots coming in, and there we go, the first one and the second one, and then huge round of applause to ASIT Esports, man. I did not feel like, or maybe there was an instant this vibe that ASIT Esports, they won't be able to survive there, but they came up top and taking this winner chicken dinner. Let's just have a look on the stats, because we can see Crypto taking 4 elimination, K2 will be taking 3, and Pritham will be taking 5. In total, they're having 12 elimination points. What an amazing turn of events towards the end. K2 turning the tide in his favor. I mean, he did go down, and then as soon as the revival came into play, he took advantage of the 1 second. I believe he had to go for that play, and he did. Beautiful stuff coming in with the chicken dinner as well. And Pritham is going to be the MVP coming into this one. All body shots, 100%, by the way. He's just being the body shot barrier at the moment. 5 eliminations, 601 damage, no assist, 29 minutes of survival time, along with 4 knocks and 176 heal. This
is a great start for the Pakistan region. I mean, especially for SIA, of course, but the entirety of the region as well, because they were surviving till the end. Almost all of these teams. Preetham with 5 eliminations, Crypto on the side of SIA with 4 eliminations, Sunchill on the side of Skyforce with 628 damage and 3 eliminations, and BTR Kiovo, well, he tried his best towards the end to survive. I believe he was on top 3 with 3 eliminations. So everyone played out perfectly. The teams to watch, well, ASI8 definitely going to be someone you need to keep an eye on. Yep. ASI8 is definitely a team to watch out, because the way they actually pulled that 1v2 being really low to HP still, I mean, it's all potential caliber. But SKYFORCE is AMINZ Esports and Team 4 Thrives. I mean, 3 of the Pakistani flags all together, reigning supreme, and just for team. I mean, these are just teams from Pakistan, and the flags are just waving in the air, and you can feel the air right there. But let's just have a look on the match summary, because 67 total elimination, 11 grenade elimination, and 325 meter was the longest elimination on the side of Boom Kibo. So Boom Esports, a huge round of applause for them as well, and 1 year drop looted so far, but great performance and great match. But Edge, after this we'll be having a look on the match rankings and then overall standing. Super duper excited to see where and which team is doing that tabletop right now. And I want to see that as well, to see which team will be holding on to that #1 spot at the moment. But at the same time, we will be waiting to see the top 16 as well, because once again, playoffs, top 16 is where you need to be. You don't really need to worry about that top position. But as we take a look at the match standings, we have ASI8, beautiful performance coming in, 12 eliminations, 22 total points, 13 points for 313 Esports, BTR on 10, AMINZ Esports on 8, RIQ with 8 points as well, 7 points for Skyforce, 6 for Boom Esports and 4 Tribes, 5 for HKG, 4 points for Team Secret, 3 for DRS, as well as Young on Galacticos. Finally, some points on the board for them. 1 point for VOIN, Flash and T2K, WARGAYE as well, 52 Esports and Phoenix Rise. Unfortunately, will not be able to get anything done in this one. Yep. This is it. ASI Esports 22 points, 10 for placement, 12 for the domination, and 12 points for eliminations, right? So this is it. I mean, these are the match rankings, and from 12th spot to 18 they got eliminated way too early into the game. But RRQ 41 points, and we just saw 3 matches. RRQ, 2 of the matches were decent. First match they were just totally decimated, and ASI Esports being the second team, Boom Esports being the third, DRS being the fourth, and 313 Esports being the top 5 team, right? Team Secret, Team VOIN, Esports, BTR and WARGAYE. Oh, Edge, we can see WARGAYE on the first page. So this is good to see, because they are also making a comeback, because into the previous phase and in the qualifiers we haven't seen this team playing good. So today it's just better for them to make a huge comeback. Let's just see what's going to be happening, but we'll be having a look on the second page as well, because teams on the second page, they're struggling a little bit. Once here in 10th position to 18th position, Skyforce, 52 Esports, 4th Tribes, Hong Kong team, Phoenix Rise, AMINZ Esports, Team Flash, T2K, Young on Galacticos. And the ones at the bottom right now, unfortunately, this was the only game that they actually did manage to, get any points. Yes, we'll see if the next cycle will be any better for them, because having 3 points, I mean, single-digit scoreline after 3 games, not where you want to be. Yes, absolutely. I mean, you shouldn't be there, because I mean that's true. But there will be some teams being at the bottom. But let's just have a look on the overall MVP, because Boom Mall with 9 elimination and 11 knockouts, he surpassed Team Secret UK, SI8 Esports, K2 Team Secret Zeris, and Boom Esports Yummy799 also got to be joining the spot. But there are 2 players of Boom Esports, 2 players of Team Secrets, and single player from Pakistan, which is SI8 K2. This is the overall MVP, and yeah, I mean, Boom are going to be really happy to see 2 familiar faces for them in the overall MVP that is stepping up. That's what they need. Vote for your favorite team. And how do you do it? Well, it's pretty simple. Hashtag team tag. You type in the chat hashtag and your favorite team's tag, and that's all you need to do. And then the top 2 teams in terms of votes will be promoted to the grand finals as 2 fan favorite teams. At the moment, it's 4 Tribes leading the charts in terms of votes, almost hitting that 8,000 mark. DRS just above 6,000. SI not that far away though, 3,000 points.
they are looking strong, especially after this chicken dinner. I'm pretty sure those fans are going to be delighted, and they probably will be, spamming that. And we have our winner on the giveaway here, match number 3, Miramar. And anyone that is joining the giveaway and then not staying towards the end of the stream, please do not make that mistake. Make sure you're staying in till the end to see if you have won, because now that player with the character ID, well, congratulations, you have won yourself another, I don't want to say another, but a free Royal Pass coming in. And any of you guys that have unfortunately not been successful in getting yourself, the win here in the giveaway, make sure to type in exclamation giveaway in the live chat to get the giveaway link and then follow the instructions. It's pretty easy. You open the website and scroll to the giveaway post and then tap on the giveaway image. Answer the question correctly and your real name, once again, your real name and PUBG Mobile character ID, and that's all you need to do. And then after every match from here on forward, we will be selecting one winner, and Royal Passes will be distributed to the winners after each match. So we are done with 3 matches, and guess what? 3 Royal Pass have been given away already. Yeah, absolutely. And अगर आप लोग एक बारी सोच रहे हो एंड वंडर कर रहे हो कि कैसे स्टेप्स रहेंगे और क्या स्टेप्स रहेंगे गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे आप लोग एक बारी चैट के अंदर जरूर लिखना. लिखो भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले से ही पिन कमेंट अगर आप लोग एक बारी टैप करोगे वहाँ पे एक लिंक रहेगा, सो टैप देयर एंड आप लोग रीडायरेक्ट करोगे एक नए वेब पेज के ऊपर इन योर ब्राउजर, एंड वहाँ पर जाकर वेबसाइट के ऊपर आप लोग देखोगे एक इमेज होगी, टैप ऑन दैट इमेज एंड वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का आप लोग आंसर करना. एंड देन उसके बाद में आप लोगों की अपनी जो PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी है उसको बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल सही तरीके से लिखना एंड अपना रियल नेम just type it there, and that's it. You're done. You are in, and you participate in the giveaway like that. So कुछ ज़्यादा heavy या फिर complex steps नहीं है. Just follow it and it's just basic. So do it. And हर मैच के अंदर हम लोग giveaway के winners को announce करते रहेंगे, and थोड़ा बहुत suspense हमारे लिए भी बना रहेगा and आप लोगों के लिए भी बना रहेगा. And there we have it. That is just so simple. So keep on doing it, and this is just some fun giveaways happening. And huge shout out to 141 Esports for providing that. But Edge, we are done with it, and I guess we're going to be starting our cycle again, because this next match is going to be Rondo. The first Rondo was absolutely magical. So looking forward to the second one for sure. We've seen the Indonesian team VOIN come out on top. Nepali Giants DRS come out on top. The Pakistani, beautiful region out there coming up, along with the 3 teams towards the end, if I'm not wrong. AMINZ 313 and ASI8. Both of those teams going really strong towards the end. 313 and ASI8. ASI8 outperforming 3-3, clearly doing that last fight. K2, he was just magical to watch. But anyway, we are done with 3 matches. We are now heading down to the last 3 matches of the day, ladies and gentlemen. This is Phase 2 Playoffs Day 1. So make sure you subscribe to the channel. Make sure you hit that bell icon as well, so you don't miss out on any of the action throughout any of the days, because all of your favorite teams and your favorite players will be showing up, along with your favorite casters, if I may. So you don't want to miss out on any of the action. You definitely don't want to miss out on the grand finals, on the giveaways as well that we have going on. So make sure to check out the pinned comment as well to keep yourself updated, and also check out 141 Esports on Instagram, link down in the description. I hope audience day are loving the casting, and जो भी हम लोग यहाँ पे casting कर रहे हैं, hope you guys are enjoying it. But yes, there's one more notification and alert for you all. अगर आप लोगों ने 141 Esports के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अभी एशिया बैटल विद चैप्टर 3 को विटनेस कर रहे हैं, एंड ये तो सिर्फ अभी तक फेज 2 की स्टार्टिंग है. इसके बाद हमारे पास फेज 3 भी है. सो नॉन स्टॉप
एक्शन अभी भी हमारे पास बाकी है 19 दिन का. सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? तो चाहिए जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करिए एंड वहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल स्टैंडिंग्स एंड दिन के एंड की जो भी ओवरऑल स्टैंडिंग्स या फिर ओवरऑल एमवीपीज होते हैं वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं. सो आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्रीफ रहेगा एंड आप लोग वहाँ पे भी जाके एक बार देख सकते हो. सो प्लीज डू फॉलो इंस्टाग्राम एज वेल एंड प्लीज गो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब. But Edge, we are going to be starting the cycle really soon, and the next match is going to be Rondo. Let's see which team will be coming up on top and taking that winner chicken dinner. But ladies and gentlemen, we are starting up strong with phase second, and these are playoffs qualifiers. And this is going to be Asia Battle World Chapter 3rd for you all, and this is match number 4. Will this be another quick fight towards New York's factory? Oh, it's a multi-part actually. Okay, this is gonna be interesting. This is gonna be a different one. I mean, there is a really good chance that New York's factory will be coming into play. Yeah, for sure. We have one leaning towards long haul, one leaning towards the thing long guarded. So a lot of these teams, a lot of these players have opportunities to go everywhere on the map. It looks like Phoenix Rise 3-1-3 as well. All of these Pakistani teams are leading towards that New York's factory. This could be a bloodbath here, Inferno. I mean, that could be the case, and we know कि New York's factory में बहुत सारी teams and especially Pakistani teams, बहुत सारी Pakistani teams test track और New York's factory पर उतरती हैं और वहाँ पर हम लोग को एक bloodbath देखने को मिलता है. And we can see in the starting phase only ये जो 4v4 fights हैं, ये जो 4 फाइट्स हैं और अप क्लोज पर्सनल फाइट से बहुत जल्द स्टार्ट हो जाती है. तीन लॉन्ग गार्डन के रीजन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे 3 या 4 टीम्स उतर रही हैं. टेस्ट्रैक और न्यूयॉर्क फैक्ट्री तो हमारे पास हॉट ड्रॉप है ही रोंडो के मुकाबले के ऊपर, और हम लोग देख सकते हैं वाइन के कुछ प्लेयर्स नॉकआउट लेते हैं बीटीआर के ऊपर. 2004 ही इज डाउन टू हिज नीज एंड यहाँ से शायद से कम बैक करना ठीक बीटीआर के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है. रिकॉल यहाँ पे कर लिया जाए तो शायद से थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है, बट टीम बीटीआर दे लॉस्ट 3 players and Edge. They're having an only 1 recall and they used it. So BTR early stage and early, yeah, I mean early stage and early disadvantage is not a great thing for them. They will be back, so hopefully now the things will look better, as this is going to be a second chance to them into this map already pretty early. But यहाँ पे उज़ैफा को take down कर देंगे माफिया. एक और frag यहाँ पे फलक will be gone as well. IQQ immediately recall करने की कोशिश. T24 will be trying to hold them off at the moment. IQQ recall कर देंगे ज़रूर. दोनों player फलक और हुज़ैफा वापस आ जाएंगे सर्वर पे. Stage 1 circle coming into play in the next minute and a half. 3-1-3 esports, 4 Thrives and Phoenix Rise. 3 Pakistani team यहाँ पे. But we all know who's the one usually coming out on top. So I kind of am expecting the similar outcome, but we never know. Because 3-1-3, we haven't really seen a lot coming in from them. So they might be causing some troubles. But guess what? AMINZ is also here, but not in the vicinity. We've seen how good that he was last time. I'm hoping to see if he can pull out something similar. But abhi ke liye, 4 Thrives. Waiting for the perfect opportunity against Phoenix Rise. I mean, that's the case. Perfect opportunity, perfect opening, and perfect timing. सब कुछ लाइनअप सिंक में चलने चाहिए टू विन दिस 4v4 बैटल. एंड ये जो कोऑर्डिनेशन हम सिनर्जी के बारे में बात करते हैं, सभी पाकिस्तानी टीम्स के पास में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन सिनर्जी है, बट हम लोग पता है नहीं एक्स फैक्ट्री के रीजन में यहाँ पर टीम 4 Thrives का यहाँ पे ये जो यूजुअल ड्रॉप है यहाँ पर हम लोग को फिनिक्स राइज भी देखने को मिलेगी. और देखिए T24 OP M416 से शॉट्स लिए कनेक्शन यहाँ पे नहीं बनेंगे. टीम फिनिक्स राइज 3-1-3 esports के ऊपर नॉक करते हुए फलक यहाँ पे शायद से नॉकआउट लिया या फिर वो स्टिल किल को स्टील करेंगे, व्हिच इज गुड. सो यहाँ पर बहुत प्यारी ओपनिंग और पहला एलिमिनेशन यहाँ पर मिलेगा टीम 4 Thrives को. एक और नॉकआउट हुज़ैफा AUG के साथ में बहुत एक अच्छा लेजर स्प्रे. आगे बढ़ेंगे जो ग्रेनेड है. अभी ज्वाइन करें और अपना वेलकम बोनस क्लेम करें. अपना अकाउंट टॉप अप करें और 100
कोई भी खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, बट हालांकि एक खामियाजा तो है। T24 ओपी डाउन होंगे नीज के ऊपर और शायद से उनको फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देखिए हुसैफा बात करते करते एक और प्लेयर डाउन, फलक एंड आईक्यू के बीइंग सोल में सर्वाइवर। फलक पीछे से 416 से अच्छा कवर देते हुए फिनिक्स राइज को ऑर्डर को डाउन करेंगे और आईक्यू की जो चोर पुलिस है टॉम एंड जेरी का जो गेम है बहुत ज्यादा खिंचता हुआ, और देखिए बार बार आई मीन कोई भी आगे आ ही नहीं रहा है। जस्ट ये चोर पुलिस बोलूं, टॉम एंड जेरी बोलूं, मैं क्या बोलूं, आगे पीछे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, और शायद से कौन सा ऐसा प्लेयर रहेगा जो अपना पेशेंस लूज करेगा, और शायद से वो प्लेयर थे 313 esports के। पेशेंस लूज किया और वही शायद से गलती हुई, वही ओपनिंग थी IQQ के लिए। We've seen this play the other day as well, you know, jumping shotgun coming into play, and IQQ is just so good with that. He's going to be doing that again. As SKG, if in the heat now, SKYFORCE will be feeling really confident. 3 eliminations for them, and they have 4 players standing at the moment. SKG, they will lose another player. 0666 will be going down. Carless will be getting himself another. That's 3 eliminations now. SKYFORCE feeling really confident under the map of Rondo here. Ladies and gentlemen, 18 teams still in. We have not seen a single elimination, which is really good. This Rondo is, as you know, meeting our expectations at the moment. We are going to see so many fights, especially towards this New York factory, where we'll be directing our attention again. And Falak, well, another beautiful knock and another beautiful finish as well. Walker will get taken down. Phoenix Rise, well, unfortunately, will lose a couple more players. बट गॉडलेस 79 स्काईफोर्सेस की तरफ से डोमिनेशन का खिताब और टैग लेके जाएंगे पहले जोन के अंदर। देखते हैं अभी आगे आने वाले समय के अंदर कौन से और हम लोग को प्लेयर्स या फिर खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो डोमिनेशन का टैग लेके जाएंगे। और देखिए सामने प्लेयर्स है और ये शायद से छोटा सा ग्लिच कोई DRS के प्लेयर्स, दैट वाज लुकिंग वे टू फनी। ऐसा लग रहा था कि जो प्लेयर्स वो ओपन में खड़े हुए थे, बट हम लोग देख सकते हैं DRS तो उस रेंज के अंदर यहाँ पर आती हुई एक और टीम को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दे वी गो। Oh, those are not teams actually. Edge. Wait, what? I'm getting confused. What was that? Okay. Alright. Maybe we don't know. Audience, please एक बार हम लोग को enlight जरूर करना है actually क्या है. And I guess, alright. Okay. Those are some bot kind of thingy जो loot देती है players को. Yeah, those are loot rates incoming, which is great. So DRS. I actually thought that they were eliminating teams and players like that. That was insane to see. We got confused a little bit right there. But let's just have a look on T2K Esports. One Nepali team coming with the fight down scenarios. Into the previous one, especially Edge, they had an insane fight. And SKYFORCE coming up close post. No! First knockout, Godless 79 with an SLK. Reigning supreme. And he is just raining blood right now in this lobby. Dominator. One more. Yep. 4 points now coming up. SKG, they're going to be feeling really unhappy with this performance at the moment. I mean, they still have players surviving, 3 eliminations to their name, but they are losing players left, right, and center. Sunchi drops another one, gets another point for their squad. That's 6 now for the side of SKYFORCE, as we don't have any squad eliminations yet, but Hong Kong team, they are just getting taken down again and again and again, and they just have to keep using that recall system. I mean, non-stop at this point. And the stage 1 circle will be coming into play, which means the side of SKYFORCE, they will have to go for the rotation. Absolutely. I mean, ESPORTS एक भी यहाँ पे एलिमिनेशन लोग को नहीं मिला है। हालांकि ये पाकिस्तानी टीम ये भी बहुत अच्छा खेलती है फेज 1 प्लेऑफ्स के अंदर, बट दूसरी टीम्स इन लोगों को आउटशाइन करेंगी और बेटर खेलेंगी, जिसकी वजह से टॉप 18 के अंदर हम लोग को ये टीम नहीं देखने को मिली जो सेकंड पेज पे कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही थी। I mean, ESPORTS are looking forward for their qualification into the grand finals of phase 2. Let's see. And especially I really love the roadmap and the event roadmap, to be honest, because phase 1 ke grand finals or phase 2 ke grand finals and phase 3, I mean, this is going to be the intense battle for consecutively 30 days. I mean, we are done with 10 days of broadcast, and we did witness Team Flash being the winner and being the supreme team in the phase 1 and the defending champions from the previous season of Asia Battle Wars Chapter 2, which were BTR. But let's just have a look on the mini-map match, because the breathing space on the map of Rondo, it's getting decreased.
And especially there's a lot of team and majority of the teams are out of the zone. And look at the rotation. 4 Thrives versus DRS. That could be the fight actually burning up really soon. ASIT Sports versus Younger Galacticons in the zone. We can see the fights happening. Team Phoenix is really close with Team BTR if I'm not wrong. Team 52 is also close. Movie Sports is also close. So it's all chaos and messed up situation happening right now on the map of Roundhill. They gotta be careful. RQ. I mean, we've seen this before, right? You know, the players inside of RQ getting taken down when they were in the vehicles rotating towards a different position. Exactly. RQ. Pragos. He has been knocked off and revived हो सकता है सामने से स्प्रे आते हुए कौन सी टीम है एक्चुअली सामने से भी पीछे से भी और 2 एंगल से यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा टीम फिनिक्स राइज बहुत ज्यादा लो है टीम आरक्यू रिटेलिएशन में स्प्रे डालते हुए टेक डीमन और वॉकर कितना ज्यादा लो हो चुके एचपी के ऊपर और शायद से अब यहाँ पर ये लोग जोन के अंदर है रिपोजिशन करना पड़ेगा ये कंपाउंड ढूंढना पड़ेगा आईजीएल बखूबियत तरीके से अपना रोल बिल्कुल निभाएंगे और इनको एक बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे एक कंपाउंड और एक कंपाउंड पूरा का पूरा खा लिया 6x डाला गया अपने प्लेयर के लिए लीजिए 6x और 3x के बीच में ट्रेड चलता हुआ एंड एच फिनिक्स राइज जिनका नाम था डीमन ई-स्पोर्ट्स पिछले फेजेस के अंदर अब बन चुके हैं फिनिक्स राइज एंड यू नो द स्टोरी ऑफ फिनिक्स बिकॉज हाउ दे राइज एक्चुअली फ्रॉम एशेस फिनिक्स राइज they did fall off in phase 1 and they weren't able to get qualified into the grand finals so they are in the ashes और देखते हैं जो चारों के चारों फिनिक्स है फिनिक्स राइज के क्या राइज कर पाते हैं या फिर नहीं Let's see if they can actually live to do justice to their name as they will be still alive. We'll wait and watch if they can just rise as you said. BTR on the other hand, they will spot the player. Oh, I thought they did, and now they did, but I believe, okay, there was just a knock. So, Federals will be back on his feet. Nothing to worry about for the side of BTR at the moment. But WARGAYE, there's only one player standing right now successfully on his feet. So we'll have to wait and watch if the recall will be coming in anytime soon for them. But Phoenix Rising, they're taking on the players on the side of ASI8. ASI8 coming fresh off of a chicken dinner. They could be... feeling really confident right now. And if anyone's trying to take them down, they have to be really, really cautious. Oh, they gotta be really cautious. फलक आते हुए क्लोज रेंज के अंदर T24 को ओपी हालांकि डाउन हो चुके फलक अपनी S12K का कहर मचाते हुए क्लोज रेंज के अंदर एक नॉकआउट लेंगे मोलोटॉव यहाँ पे डाला जाएगा आरआरक्यू के प्लेयर के अगेंस्ट यहाँ पे एक कंफर्मेशन और फाइनलाइजेशन लेने का ट्राई करेंगे इट्स एक्चुअली नॉट आरआरक्यू इट्स टीम बीटीआर माय बैड पर ये जो इंडोनेशियन टीम्स है डोमिनेंस दिखाती हुई और देख सकते हैं T24 ओपी जा तो चुके हैं उनका एक रिग्रेट जरूर रहेगा एक और ग्रेनेड यहाँ पे फलक एक नहीं 2 ग्रेनेड यहाँ पे फलक के ऊपर आएंगे हुज़ैफा और IQQ being the dual survivor हुज़ैफा ने एक यहाँ पे फर्स्ट रेड पॉपिंग करेंगे एनर्जी ड्रिंक भी यहाँ पे पॉपिंग करेंगे बट क्लोज रेंज के अंदर टीम बीटीआर द डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रॉम एशिया Battlefield Chapter 2nd they are defending spot so yes Stellity टीम BTR आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे 6 एलिमिनेशन के बाद यहाँ पे शायद से टीम 4 Thrives के एलिमिनेशन के ऊपर भी घात लगा के बैठे हुए फलक का जो नॉकआउट है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है ये जो खामियाजा भुगता है टीम 4 Thrives ने शायद से मुश्किल हो सकती है 2 प्लेयर डाउन और 2 प्लेयर जिंदा यहाँ पर बैठे हुए हैं वेट करेंगे और इसी के साथ में IQQ रिटेलिएशन नॉकआउट S12K के साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुज़ैफा नॉकआउट दे सकते हैं इस ग्रेनेड के साथ में प्रॉमिसिंग ग्रेनेड हो सकता है बाहर डालेंगे बट नहीं उस ग्रेनेड की ट्रैजेक्टरी इतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं थी एच Both Thrives holding on to the last suburban player there. Let's see if he can capitalize. मैं हंस मौके पर इसे पहन कर जाता हूँ वोटिंग शुरू जैसे उसका One more now, but that's about it for Thrive. They're going to get taken down 8 eliminations. The first team to get, pushed away out of the server. Now that is unfortunate. They do have plenty of points in terms of elimination, but we never expected 4 Thrives to be the first one to get eliminated on the map of Rondo, especially. Man, especially क्योंकि रोंडो का मुकाबला और 4 Thrives ये दोनों एक ऐसी चीज है जो एक साथ चलती है एक पैरेलल सिंक के साथ चलती है और अभी के लिए टीम 4 Thrives होती हुई पहली टीम जो एलिमिनेट हो जाएगी
बट देखते हैं और कोई ऐसी पाकिस्तानी टीम रहेगी जो चिकन डिनर ले पाएगी या फिर इस मैच के अंदर देखने वाली चीज रहेगी। स्काई फोर्सेस 9 अच्छे एलिमिनेशन लेने के बाद में दे लूजिंग द स्पॉट, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्काई फोर्सेस जिंदा है सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर के साथ में, एक प्लेयर नॉकआउट। दे आर फीलिंग देयर एट DRS गेमिंग, दे आर पुशिंग। और एक्चुअली मैं एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगा, अगर पाकिस्तानी टीम्स नहीं तो ये नेपाली टीम्स आज के दिन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है। देखते हैं एंड इंडोनेशियन टीम्स और वियतनामी टीम्स का तो यहाँ पे जो डोमिनेशन है बरकरार रहता ही है। और देखिए आगे तरफ बढ़ते हुए टीम वारगाये फ्रेज को यहाँ पे डाउन करेंगे। शाका अभी भी जिंदा है, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। वारगाये की टीम के यहाँ पर शायद से 3 प्लेयर जा चुके हैं, 1 प्लेयर नॉकआउट है। और बात करते ही करते वारगाये के चारों प्लेयर्स यहाँ पे डाउन और चारों का निश्चित, और यहाँ से टीम वारगाये हुई एलिमिनेट। 2 teams now gone, and both of them being the Pakistani teams as well. $50 players now, 16 teams, 3 eliminations for Team Flash. Feels like they're finally picking up the pace. It's been a while that they were alive, for this long in any of the maps. 15-minute mark coming in. 49. DRS, they will be eliminated as well. And look at that, Crypto just getting knocked by the vehicle there in HKG. They will get themselves another point. In the meanwhile, ASI8 have lost a player, but K2 and Preetham are still alive, and Aaron as well. All of these players are really, really the important ones. Yep. Oh, the sprays, Preetham. No! बहुत ज़्यादा कम HP थी उनकी एनिमी की। K2 और शायद से इस सोलमन सर्वाइवर नेड आएगा, डोमिनेशन हो सकता है शायद से उस टीम का। एंड ASI esports भी यहाँ से एलिमिनेट होती हुई। This was bad for them, and ASI esports they just got eliminated like that. RRQ की तरफ हम लोग यहाँ पे नजर डालेंगे जरूर, क्योंकि BT और RRQ अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन के अंदर। और यहाँ पर टीम फ्लैश हम लोग देख सकते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ फेज नंबर 1 3-1-3 माफिया भी यहाँ पर डाउन हो गए। बहुत सारे पाकिस्तानी फ्लैग्स यहाँ पर वेव करते हुए फील्ड के अंदर भी नॉकआउट जो ले रहे हैं, नॉक भी हो रहे हैं और यहाँ पर एलिमिनेट भी हो रहे हैं। सो ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग ग्रेट टुडे। लेट्स सी एंड one of the players of VOIN got knocked out, which was bad. Let's just see क्या होता है। And VOIN esports के actually 2 players knocked out हो चुके हैं। Wait, what is happening? VOIN esports, why they are losing players? I don't know. It's getting chaotic, It's not just getting chaotic; it's also getting a little confusing with the way everyone's just scattered on the map, right? I mean, I understand how you feel, Input. I understand what you're feeling right now. It's okay, it's understandable. But the way this match is going, as weird as it looks, it is interesting. It's giving you hope to see something very different, something we have not seen in a while. And I think that's lovely, to be really honest. I kind of am enjoying this. I mean, I'm chilling right now, sitting back, laid back, just holding on, sipping on my cup of tea here, and watching these players just, put up an incredible show here on the map of Rondo. Stage 4 circle coming to an end here. We're down to 13 teams, 41 players. Exactly. Grenades. Oh, 2004 being the Solomon Survivor, and S12K is reigning supreme. And there we go. Team Flash just making it happening, and there we go. Let's see, Edge. I mean, teams are just getting eliminated, and there's one more team going, and they are just gone. Beautiful, beautiful stuff coming up. B2K Esports. With 3 players standing. Sorry, 4 players standing, but 3 eliminations, right? We have seen an amazing play from them in the previous matchup on the map of Orangle, if I'm not wrong. We have not seen anything apart from that, something spectacular. First game, they didn't play well. Second game, yes, that was one play that went, it was decent. Apart from that, nothing really happened in here. And look at HKG, they're so good with the vehicles. They're so good with the vehicle eliminations coming up. And, they will play up in the vehicle there as well, trying to take down the player now. In the smoke, very, very low, but from the far away, somewhere else, 52 Esports will be the one dropping them down. And now, they have compromised their positions with 3-1-3. They might capitalize this, but no, they actually will get taken down. It's down to top 9, 28 players now.
Yeah, and Team 52, 9 elimination, and this is the performance today. Team 52, immense level of performance it has been today. Let's just see what's going to be happening, and we can see 9 eliminations they're having edge, and we are down to our top 9 teams, and let's just see which team will be picking this winner chicken dinner. अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे टीम 52 की भी आती हुई, 9 ही एलिमिनेशन यहाँ पे इन लोगों के लिए मिले तो है, बट चिकन डिनर यहाँ पर आ पाएगा या फिर नहीं वो देखिए वही चीज़ रहेगी। 5वें स्टेज या 5वें जोन तक हम लोग यहाँ पे बढ़ चुके हैं, एंड what do you think? Can actually Team 52 pull the chicken dinner off? There is a chance. There is a really good chance. I mean, with 4 players standing, I think there's a really, high probability that they might actually be the ones coming up. RRQ. On the other hand, they're sitting on top comfortably right now and they're building up the lead. Flash with 8 eliminations. They will get taken down, but this is a very, very interesting performance coming in from them, along with VOIN getting taken out in 8th position with 4. Yeah, too much cluster for things happening. T2K Ignis being the sole one standing against RRQ, standing tall, but how long is the question. Oh my god, Ignis, that was a wonderful kind of spray, but here we go, he's gone and dusted as well. One Monopoly team out of the game, and we are down to our top 6 teams. RRQ, Boom Esports, Team Secrets, Team 52 and Team Phoenix Rise with AMINZ Esports. AMINZ Esports हालांकि एक ही प्लेयर के साथ में यहाँ पे जिंदा रहेगी, बट वो एक प्लेयर, उसका कैलिबर, उसका जो पोटेंशियल, उस खिलाड़ी का हम लोगों को पता है, चिकन डिनर निकालने के लिए पक्का हौसला है उन लोगों के पास में। सो देखते हैं बुलंद इरादे रहेंगे या फिर नहीं। और AMINZ Esports, Team Phoenix Rise, दोनों पाकिस्तानी टीम्स यहाँ पर अभी तक जिंदा। देखते हैं यहाँ पर ये जो टॉप 6 टीम्स हमारी कैसे एक दूसरे से टकराव लेती हैं और कौन सी एक टीम रहेगी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाएगी। But Edge, I mean, is the 5th zone, and we have seen a lot of chaotic rondos, but this is not that much of chaotic, right? I mean, the chaos here it's really not that much. What do you think? I'm loving it. I have no complaints with the game at the moment. It's not a typical rondo that we see, not in terms of the zone, not in terms of the plays, not in terms of, I mean, okay, maybe a little in terms of elimination, but that's natural, right? It's rondo. We will see high amounts of eliminations coming in. But this is the most excited I've been in today, at least in terms of the matches. It's making me feel alive, and it's making me want this rondo to never end. But guess what? We are coming to an end. 22-minute mark about ahead. Top 16, 17 players. Stage 6 circle will be coming in as Boom will now be trying to take down players on the side of Team Secret. Team Secret will lose that last surviving player. We're down to top 5 as they go out in position number 6 with 4 eliminations. It all comes down to Boom, 52 Esports, Phoenix Rise, RIQ and AMINZ. Booking.com ऐप पर अपने लिए बेहतरीन होटल खोजें। Team Phoenix Rise, RRQ, Team 52, Boom Esports. These are the top 4 teams and 15 players surviving. Boom Esports, आज के दिन के अंदर ये जो consistency ये लोग दिखा रहे हैं, this is the thing that we were hoping for, and this is the thing that we wanted. And एक और टीम यहाँ से eliminate हो चुकी है RRQ की, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा players knockout हो चुके हैं, एक player तो जा ही चुके हैं lobby की तरफ, 2 players knockout, यहाँ पे revival भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। But Boom Esports मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी, और बुलंद हौसले हैं इनके दिन, आज के दिन इन लोगों के, और domination आती हुई यहाँ पर बहुत अच्छी। पिछले मैचेस के अंदर भी यहाँ पर इन लोगों ने 10 से ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले थे। मैं आपको एक बारी और एक दफ़ा बताना चाहूँगा कि ई स्पोर्ट्स का ये जो मैच है अच्छा जा रहा है। पिछले मैचेस भी यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा अच्छे गए हैं एलिमिनेशन के मुकाबलों में। That is true. In terms of elimination, they are doing pretty well as we're down to the top 3 teams now. Four players on the side of Boom, 4 players on the side of Phoenix Rise, 2 players on the side, make it 3 actually, as a player is revived on the side of RRQ, but Maul will get taken down. Team with a beautiful grenade. There's a really good chance the Pakistan region might be the one coming out on top again, but Indonesian region, I mean, they have the upper hand on the map of Rondo right now with 2 teams surviving from that region. It's Boom and RRQ against the side of Phoenix Rise. I mean, it's not a team battle, of course. It is every team for itself, of course, coming in. But in terms of region,
Indonesian are reigning supreme at the moment. Exactly, and एक छोटा सा नोटिफिकेशन और अलर्ट आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने आज हमारे 40 के सब्सक्राइबर्स करा दिए तो कल भी आप लोगों के लिए 6 मैचेस के अंदर 6 गिव अवे रखे जाएंगे. सो इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर यू ऑल एनी मोर. सो जाइए जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए, और आज अगर आप लोग 40 के सब्सक्राइबर्स कराते हो सो कल के दिन के अंदर भी हम लोग 6 मैच रहेंगे और 6 गिव अवेज भी रहेंगे. सो all you have to do is just subscribe, and 141 esports will make sure to deliver. So there we have it. Go and hit that like and subscribe button right now. But let's just come back to the match, because Boom Esports at elimination, our top 3 teams यहाँ पर जिंदा है. Team Phoenix Rise भी यहाँ पर जिंदा है, RRQ भी जिंदा है. 2 Indonesian teams and Team Phoenix Rise रहेगी हमारी पाकिस्तानी team. 4v4v3 की ये जो battle है यहाँ पर convert हो चुकी है. एच में आपसे एक चीज जरूर पूछा जाएगा, जो इंडोनेशियन टीम्स है ये क्या कर रही हैं इस वाले टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि इंडोनेशियन टीम्स का जो डोमिनेशन है वो वियतनामी टीम्स और पाकिस्तानी टीम्स को भी आउटशाइन कर रहे हैं. Yeah, that is true. I mean, the consistency that these teams have is just absolutely ridiculous. And it's not just one squad, it's pretty much every single player, every single team from the region. And it's really incredible to see that they can absolutely, maintain the this caliber of gameplay throughout every matchup, day in and day out. 2 phases as well now. We've already witnessed phase 1. This is phase 2, and once again you can see them coming on top. But let's see how things go, as PR now will lose a player who's AFA, is bleeding. Boom can actually capitalize, and so are the players on the side of RIQ. They will be taking down Demon as well, and all of a sudden Phoenix Rise are being third-partied here, and they are being sandwiched. So both of these teams will be trying their best to take down the players on the side of PR. And now Phoenix Rise with only 1 player standing. They're on the verge of getting eliminated, as Byron will get taken down. Yummy getting himself into a better position, but in the meanwhile Phoenix Rise will be eliminated. We will not be seeing a Pakistani region come out on top this time. We will be looking at Boom probably looking really good to take the winner chicken dinner, as there's only 1 player on the side of RIQ standing. He is the MVP with the squad usually, and Pragos now in a 1v4. If he pulls this off, it's going to be amazing. He might be going for the revival though on the death spot. It's going to be possible, as he's the only one that is nearby, and he's the only one standing, at least on his knees at least. But he's going to be bleeding, but not yet. So they will have him back up, and they're kind of far away from the zone. So this is not going to be easy. And then he will get taken down. Pragos out in the open as well. He's going to be taken out of the picture. It is going to be Boom Esports from Indonesia. I'm so sorry. I had to joke there. Oh. I mean, you did choke, but Boom Esports did not, right? But Boom Esports, congratulations on taking this one, man. What a performance it was, being the players and being the team taking this one, and the consistency today, it has been great. Man, oh man, Boom Esports, kudos to you all, and especially all the 4 players, and Yummy. What a great person he is, and especially being in that top 5 MVP. All the Indonesian teams are just reigning supreme now, Edge. So this is it. We are done with 4 matches and maps. This was Rondo. Edge, especially you did choke, but Boom Esports, they did not even the single